उस टाइम पे I'd say कि it was a bit difficult, क्योंकि अब तो आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स नज़र आते हैं इंस्टा पे. उस टाइम पे कोई भी नहीं था, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डूइंग BDS. तो लोगों मेरे इर्द गिर्द तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. सो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू बी लाइक what are you doing, what is this? But this is something I really wanted to do, so I continued it. The internet has a lot of good and great people that I still say now, and we have continued to have this negative mindset about the world and people, and we need to see that there are lots of good and great people as well, जो well wishers होते हैं, जो अच्छे होते हैं. तो मैं तो कहती हूँ जब आपके पास कोई privilege हो, you use it to the max, because when you utilize your privilege, you pave the way for so many other people. Because things get normalized and easier. My mother loves Muzammil and she loved him at that time. In fact, जब रिश्ता आया तो वो बड़े उन्होंने इससे पूछा हमना ये like उन्होंने पूछा कि यार ये करना है तो उनका दिल चाहता है बस तू कर ले. Thank you, ma'am, for coming. I really like what you're doing on Instagram and the way you distribute this amazing content on Instagram, and how reasonable and well informed you are. Like I'm amazed to see that on Instagram, really, and I mean that, because normally जब मैं content देख रहा होता हूँ ना Instagram पे, और जब खासकर females की आती हैं तो ज़्यादातर जो है photo shoots और photos, और ज़्यादातर photos ही होती हैं, and they are traveling and they are makeuping. Maybe I'm wrong, but what do you feel like? कि कोई value makeup or just like images? Because I know Instagram is it's for images. It's a photo based platform, right? What do you feel like your content, which is value driven, versus the content most of the content creators, I will not like genderize that कि सिर्फ लड़कियां ही इस तरह का डालती हैं. What do you feel like generally कि Instagram पे content मज़ीद बेहतर हो सकता है? अच्छा, so बात ये कि पहले आपने कहा कि इट्स फोटो ड्रिवन, राइट? इट स्टार्टेड एज दैट. अब आप देखें तो इट्स ऑल अबाउट वीडियोस, इट्स ऑल अबाउट पोस्टिंग द रील्स, बिकॉज इंस्टाग्राम इज़ ट्राइंग टू वर्क लाइक टिकटॉक, बिकॉज क्लियरली दैट वाज वर्किंग आउट फॉर टिकटॉक. तो उन्होंने अपने रील्स को अब वो पाकिस्तान में भी लाए हैं, तो नाउ दे आर मोर वीडियो फर्स्ट. इनफैक्ट उनका एल्गोरिदम ऐसा हो गया है कि अगर आप फोटोज़ डालते हैं तो दे डोंट पुश दैम एज मच एज दे पुश वीडियोज़, सो दे आर मूविंग टूवर्ड्स वीडियोज़. जो दूसरी चीज़ आपने बात की उसमें कि ज़्यादातर उसमें मेकअप और फैशन और इस तरह का कॉन्टेंट आता है. आई थिंक वन ऑफ द रीजन्स फॉर दैट इज़ कि अगर आप देखें ना कि इंस्टाग्राम इज़ मोस्टली अ फीमेल प्लेटफॉर्म, औरतों का प्लेटफॉर्म है. ज़्यादातर उसके ऊपर क्रिएटर्स आपको लड़कियां ही मिलेंगी. दैट्स वेयर देव सॉर्ट ऑफ फाउंड देयर स्पेस, मेड देयर स्पेस. एंड द फैक्ट इज़ कि ज़्यादातर लड़कियों का इंटरेस्ट लाइज इन दीज एरियाज, एंड बिकॉज द इंटरेस्ट डज लाई इन दिस एरिया, दिस इज़ समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू अ लॉट ऑफ गर्ल्स एंड women, which is also why आपके जो ज़्यादा व्यूज़ हैं और ज़्यादा लाइक्स हैं वो भी उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा मिलते हैं who are creating that sort of content, because ऑडियंस ही ऐसी है. फीमेल ऑडियंस ज़्यादा है, फीमेल क्रिएटर्स ज़्यादा हैं, ऑडियंस ड्राइव कर रही है उस प्लेटफॉर्म को, वो व्यूज़ दे रही है, so people are creating that sort of content. However, I do feel कि now शॉर्ट फॉर्म में ही थोड़ा सा वैल्यू ड्रिवन वो इस तरह से होता जा रहा है कि शॉर्ट फॉर्म में लोग बिट्स एंड पीसेज ऑफ टिप्स एंड वो देना शुरू हो गए हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट्स वो देना शुरू हो गए हैं. लेकिन हाँ, आई हैव टू अग्री कि मोस्ट ऑफ द कंटेंट इज़ मेकअप एंड फैशन रिलेटेड. एंड मैंने आपसे पहले भी ये बात डिस्कस की दैट स्पेशली इन पाकिस्तान women are, they're not there yet where they are able to share more than that, outside of home, outside of fashion, outside of makeup, outside of lifestyle, because that's where they are generally in their lives. The more they progress, the more they progress in work and other fields, we will start seeing other kind of content as well. मैंने देखे हैं Instagram पे there are women who are creating content, for example freelancers के लिए वो बना रही हैं और content create कर रही हैं. फिर data scientists हैं जो बैठी हुई हैं और वो डाल रही हैं. Many of them Pakistani,
but they are abroad. So Pakistan mein, I think it's going to take some time before women can talk about these things. Even if they are women who know about these things, they are unable to create content out of it and put it out there. I guess we need more people. जब लोग आएंगे करेंगे, some people will sort of carve that pathway कि वो दूसरी चीज़ों के बारे में भी बात कर सकें, and that is more value, that is giving more value to the audience besides all this. But अगर आप उस तरह से देखें, so it's not like इन चीज़ों में कोई value नहीं है. So I mean, people are learning how to do better makeup, and people are learning how to dress better, and technically there is nothing wrong with that. If that's what people want to learn. So you'd say कि, you know, a lot of the girls, they're getting more groomed because of it. People, you know, women are setting better homes, dressing better, looking better, learning the art of makeup. And in fact, I'd say कि Instagram has, अगर आप औरतों की बात करें, तो it has provided so many women a platform that they enjoy, they love, they can easily navigate in to set up shops and e-commerce businesses. अपने घरों से बैठ के उन्होंने businesses start किए, and they've set up their shops on Instagram, और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिली है, घर से वो काम कर रही हैं, और उनको इतना एक्सपोजर और एक्सपीरियंस कह लें इन ई कॉमर्स मिला है बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म. सो आई थिंक इट्स अ प्रोसेस जिसमें कोई भी प्लेटफॉर्म जब नया आता है तो उसमें शुरू के कुछ लोग होते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं, फिर बीच में बर्स्ट ऑफ अदर काइंड ऑफ कंटेंट आते हैं, देन इवेंचुअली यू ग्रो एंड यू प्रोग्रेस. सो आई थिंक विद द प्रोग्रेशन in different fields and with the progression of more women representation in other areas, आपको eventually content में भी वो नज़र आएगा. लेकिन हाँ, at the end of the day, you will always find people creating more content based on what people enjoy more. I think मैंने बहुत एक बाउंसर देकर स्टार्ट किया, ना आपका इंट्रोडक्शन कराया. It's okay. but एक बाउंसर था मेरे ख्याल में 5वें ओवर की बॉल मैंने पहले ओवर में और पहले ही करा शायद मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया. नहीं, you were answering perfectly. But मुझे लगता है कि we are going to talk about that the Instagram thing. But I don't know where I have it was one of your podcast where I have discovered that you have done like BDS, right? Dentistry, yes, right? I'm a dentist, yeah. So tell me a little bit about how a dentist turned content creator. और बड़ी मुश्किल पढ़ाई होती है, right? And 5 years and then you are having this hospitals and clinics. Were you fed up of that journey? क्या हुआ कि मतलब you left all that and become a full-time content creator? अच्छा, so मैंने स्टार्ट की थी कंटेंट क्रिएशन अपने BDS के सेकेंड ईयर में, तो आई वाज ऑलमोस्ट एट द एंड. And where were you doing BDS from? लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज. तो मैं हॉस्टल में थी LMDC में, एंड आई वाज डूइंग माय BDS. उस टाइम पे देयर वाज नो सच थिंग एज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स इन पाकिस्तान, कोई भी नहीं. And back in 2000? ये बात है 14-15 की बात है. तो उस टाइम पे तो देयर वाज लाइक इंस्टा पे आई डेंट इवन नो कि इंस्टा ब्लॉगर्स या इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स कोई चीज़ होते हैं. मैंने जिस वजह से स्टार्ट किया, या जो मेरा एक्चुअल पर्पस था, वो ये था कि उस टाइम पे देयर वाज अ लॉट ऑफ द इंटरनेट वाज अ वेरी बैड प्लेस एट द टाइम, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी उस टाइम पे. टू मैनी कीबोर्ड वॉरियर्स, टू मैनी इशूज़, एंड आई फेल्ट कि लोग उस टाइम पे दे स्पेंड टू मच टाइम ऑन द इंटरनेट blaming others for all the problems that they were having online. So ये तुम्हारी गलती है, ये इसलिए हुआ, ये इस वजह से हुआ. But I felt कि लोग, people were not really looking at themselves on how they can be better and how they can create change. क्योंकि मैं एक चीज़ में बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ, अगर आपको कोई चीज़ बॉदर करी है, कुछ भी है, तो द फर्स्ट चेंज इट नीड्स टू कम फ्रॉम अस, यू नो. सो एंड उस टाइम पे तो ये मेरी बहुत ही लाइक आई फेल्ट रियली स्ट्रांगली अबाउट दैट. तो मुझे बस था कि वाई डजंट एनीबडी कम ऑन द इंटरनेट एंड टॉक अबाउट मोर ऑफ व्हाट वी कैन डू टू बी बेटर. एंड देन माई हस्बैंड एट द टाइम, मेरा सिर्फ निकाह हुआ था, मेरी शादी नहीं हुई थी. ही सेड 2014? Yes, निकाह हुआ था मेरा. Okay. ठीक है. So that's when he said to me कि तो आप कर ले. And I said मैं थोड़ी कर सकती हूँ, because I couldn't have imagined myself being a creator at the time. But he said कि listen, if you feel strongly about something and you have everything to be able to do it, so why don't you do it? So randomly one day I just picked up my phone and I actually started with Snapchat, where I started talking to people
like this with the camera, sharing my thoughts. And somehow, for some reason, लोगों को वो बहुत पसंद आया. फिर वो बढ़ता गया, and then turned into, then I shifted that same audience to Insta. फिर वो Insta blog बन गया. Then people became interested in my lifestyle as well. और फिर वो एक lifestyle blog बन गया. उस time पे I'd say कि it was a bit difficult, क्योंकि अब तो आपको बहुत ज़्यादा creators नज़र आते हैं Insta पे. उस time पे कोई भी नहीं था. And because I was already doing BDS, तो लोगों मेरे इर्द गिर्द तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. So a lot of people used to be like what are you doing, what is this? But this is something I really wanted to do, so I continued it, क्योंकि मुझे लोगों से जो response आता था at that time, where मेरी कोई छोटी सी कही हुई बात पे मुझे लोगों के मैसेजेस आते थे कि oh this thing you said, it changed my life, or this did, मतलब छोटी छोटी बातों से it made a lot of impact in people's life. So that thing just kept me going, I'm going to keep doing it. तो and then obviously आप जैसे आपने कहा कि BDS की पढ़ाई और वो बहुत ज़्यादा होता है. I'd say कि मुझे उस टाइम पे भी लोगों ने कहा था, people around me in dental school used to say कि हमना तुम fail हो जाओगी क्योंकि you spend like a lot of time doing this. And were you a talented student? I was a pretty average student. And I never failed. I actually did really well. And I was very happy because I was also doing this. So मैं अपना ये passion भी pursue कर रही थी और साथ साथ पढ़ भी रही थी और hostel life भी थी. And I surprised myself and my teachers and my peers as well because they thought that I'm very distracted by this. But अल्लाह का करना है, ये बस वो हो गया. And then I think when I started, there were a few other girls that started at the time, and then it just grew and it grew, and now Insta influencers are like a huge thing. Us time पर तो मैं सोच भी नहीं सकती थी. I was like, initially, what were some of your perspectives या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिस पर आप बात किया करती थी where people would resonate with you? Right. So एक तो I was very small at that time. I was like 21, 22. Yes. Yeah. तो मैं कोई बहुत कोई wise words of wisdom नहीं थे मेरे. But there were things that, I mean, I would say that I was very wise for that age. I'll give myself that credit. Okay. And so I used to talk about a lot of things that can, जो मैं बात करती थी कि how we can be better, how we can be more forgiving towards people, and what are the steps we can take, or how we can just be better human beings, और real life situations को निकाल के लोगों के साथ share करती थी. So I think because I used to talk about more real life things, in fact like मैं university life के बारे में कोई बात कर लूँगी, that's relatable for people. Like just share stories and then give my own sort of lessons from my own experiences. So I think people resonated with that a lot because, and I'll tell you why as well, because nobody on the internet was talking about these things. So first movers advantage is a big thing. So when you're a breath of fresh air on the internet, people really like that. But again एक चीज़ आपको खुद पे भी होती है यार, सिर्फ मैं ही हूँ, ना तो मेरी सहेलियों में कोई है, ना तो मेरी फैमिली में कोई है, लोगों को चीज़ समझ भी नहीं आ रही, तो you think like यार मैं कुछ क्या कर रही हूँ या कर रहा हूँ. आपको कभी ऐसा हुआ कि यार am I like stupid or what, क्या मैं ये कर रही हूँ, what I will get out of it, or were you thinking at some time कि यार सही है अभी नहीं है, 5 साल के बाद शायद I can create a whole career out of it? Okay, interesting. So like you said, कोई भी नहीं मेरे आगे पीछे कर रहा था. Self doubt was there so many times. So many times I felt like I'm stupid and like what am I even doing? Because people, क्योंकि मैं आपको उस टाइम पे बताऊँ, मुझे मेरी अपनी फ्रेंड्स आके कहती थी कि यार तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुमने अपना प्राइवेट अकाउंट पब्लिक कर दिया और तुम्हें अजीब लड़के देख रहे हैं, राइट? बिकॉज उस टाइम पे इट वाज लाइक वेरी ऑड. Yes, true. But what I realized because of that was that the internet has a lot of good and great people that I still say now, and we have continued to have this negative mindset about the world and people. And we need to see that there are lots of good and great people as well. जो well wishers होते हैं, जो अच्छे होते हैं, उनके लिए हमें काम करना है, उनके लिए हमें content बनाना है. So if I have even like, थोड़ी सी value to give in a time when there was nobody doing that, I really enjoyed it and I really liked the response. So I'd say कि there was a lot of noise from people around me that said things जिससे मैं बहुत judged feel करती थी और
बुरा फील करती थी. मुझे याद है मैंने ना बीच में अपने यूनिवर्सिटी के कोर्ट यार्ड में जाना छोड़ दिया था क्योंकि मैं वहाँ जाती थी और मुझे ऐसा लगता था मुझे सब लोग देख रहे हैं और जज कर रहे हैं. बट देन तो मैंने थोड़ा अर्सा के लिए वो किया बिकॉज मुझे था कि इफ़ आई एम गोइंग टू लेट दैट नॉइज़ इन देन आई विल गिव अप. एंड देयर वर टाइम्स आई वांटेड टू लीव इट के लोग मुझे जज करें कि ये कौन होती है, हमें चीज़ें बताने वाली है, ऐसे तैयार होने वाली है, इस तरह करने वाली है, अपने लाइफ स्टाइल दिखाने वाली. बट मैं आपको फिर से ये कहूँगी कि देयर वाज दैट नॉइज़ एंड देन देयर वाज अ रिस्पॉन्स दैट आई वाज गेटिंग फ्रॉम पीपल हु वर सेइंग दैट आई एम टीचिंग देम सो मेनी थिंग्स ऑन द डेली बेसिस एंड हेल्पिंग देम. तो उस वजह से आई थिंक आई केप्ट गोइंग. बट जहाँ आपने करियर वाली बात की, आई हैड नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया दैट आई कैन इवन मेक ₹1 आउट ऑफ दिस बिकॉज मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आई डिड नॉट नो बिकॉज मैं एक BDS की स्टूडेंट थी. सो मुझे डिजिटल मार्केटिंग, आई न्यू नथिंग अबाउट दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ. आई वॉज जस्ट प्योरली, बहुत मासूम थी मैं. और मैं कहूँगी कि आई वॉज़ वेरी नाइव एंड शायद उसी चीज़ का मुझे फ़ायदा हुआ कि आई वॉज़ प्योरली जस्ट डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ द पर्पज़ विच वॉज टू क्रिएट दैट इम्पैक्ट. और मैं करती गई और फिर मुझे पहली पेड पार्टनरशिप भी आ गई और पहली क्या कहते हैं PR भी आ गया. और बस इट जस्ट हैपेंड एंड टुडे this is what I make my entire income out of. This is my livelihood. So no, I had no such visions. I was just taking it one day at a time. Initially, because you said कि generally लोग अच्छे होते हैं, normally people are positive, और वो noise होती है और एक negativity होती है. From a female perspective, when you were like, अगर मैं कहूँ कि यार आप graduate हो गई और and now you think that this is working for you, तो कितना criticism मिला आपको in terms of bashing, कह लो कि यार she doesn't know what she's talking about, और ये क्या है, भाषण झाड़ रही है या क्या हमें ये सिखा रही है फलाने टॉपिक पे. इफ़ यू वर टू एट दैट टाइम बैक इन 2014 में आपने स्टार्ट किया, लेट्स से इन द मिड career like 2016 and 17, the type of audience that you were attracting and the type of criticism that you were attracting, क्या लगता है आपको from a female's perspective in Pakistan? Like आपने तो कहा ना पॉजिटिव, आप पॉजिटिव पर सोचो, लोग अच्छे होते, but was that really the case at that time? Okay, so I'd say that, like I said, it was a very different thing and it was very well received by people at the time. और mid में जब आप आए तो हाँ, the more you grow, आपकी audience grow करिए तो फिर हर तरह के लोग उसमें आ रहे हैं. And आते थे बट अगेन ज़्यादा लोग अच्छे थे, बहुत कम लोग थे जो कुछ आके बुरा कहते थे या बुरा करते थे. एंड आई वुड से कि again I had my moments of self-doubt, but I swear I loved doing what I did. and from a female perspective उस पे आऊँ, I'd say कि मैंने बहुत सोचा था उस टाइम पे इस बारे में कि देखें, there were a lot of factors that contribute to the fact कि as a woman this was easier for me. और वो मैं इस तरह से आपको बताती हूँ कि I had my family's support. They did not mind the fact कि मेरा प्राइवेट से पब्लिक अकाउंट था. आई हैड माई हस्बैंड सपोर्ट, आई वॉज मैरिड. बहुत लोगों का मसला ये होता है कि शादी नहीं हुई ना तो तब तक बिकॉज लाइक वो अलाउ ही नहीं करेंगे औरतों को, बिकॉज उनको होगा कि यार फिर आगे शादी कैसे होगी, आगे मसला कैसे होगा. माई हस्बैंड वॉज ऑलरेडी ऑन बोर्ड एंड ओके विद इट बिकॉज माई हस्बैंड वॉज ऑलरेडी अ क्रिएटर at the time. So my in-laws were also and my sister-in-law was also into it, so my in-laws were also pretty okay about it. So for me, because I had all of that privilege and I felt कि अगर मैं नहीं ये रास्ता खोलूँगी औरतों के लिए तो कौन खोलेगा. अगर मेरे जैसा इंसान नहीं खोलेगा तो कौन खोलेगा. अब आप आज देखें कि वो चीज़ नॉर्मलाइज्ड है. कोई नॉर्मलाइज करता है ना, और नॉर्मलाइज वही करता है जिसके पास वो अपॉर्चुनिटी है. तो मैं तो कहती हूँ जब आपके पास कोई प्रिविलेज हो, यू यूज़ इट टू द मैक्स, बिकॉज व्हेन यू यूटिलाइज योर प्रिविलेज you pave the way for so many other people. Because things get normalized and easier. फिर लोगों को नजर आना शुरू किया, भाई there is no harm in this, like it's fine, कुछ गलत तो नहीं आप कर रहे. It's not like I'm doing something wrong on the internet. Correct, 100%. Yeah, I'm just a girl, that's it. That's what for some people made it wrong in their head, but it's not actually wrong. I'm not going and doing something wrong on the internet. So
फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों का दिमाग खुल जाता है एंड देयर फाइन एंड यू सी कि इवन टिकटॉक पे देयर आर गर्ल्स एंड वुमेन आउट देयर एंड इट्स जस्ट बिकम सच अ नॉर्मलाइज्ड थिंग व्हेन फॉर मी विद इन माई सोसाइटी एंड माई पीपल इट वाज वियर्ड. And now look where we are. Are you practicing medicine now? So I did up until 2020. Okay. एक क्लिनिक में काम कर रही थी और मैंने वो क्लिनिक, अब मुझे तो नहीं पता था कि मार्च में कोविड आ जाएगा, तो मैंने बिल्कुल कोविड से पहले वो क्लिनिक छोड़ दिया और उसकी वजह ये थी कि आई वाज़न्ट हैप्पी वर्किंग देयर. तो मैंने सोचा कि वैसे भी आई एम गोइंग टू लीव दिस क्लिनिक एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इन अदर प्लेसेस. लेकिन उस टाइम पे जब कोविड आ गया तो ऑब्वियसली नोबडी वाज हायरिंग न्यू पीपल. क्लिनिक्स बंद हो रहे थे, सिर्फ इमरजेंसी डॉक्टर्स भेजे थे, नोबडी, इनफैक्ट ले ऑफ्स हो रहे थे, नोबडी वाज गोइंग टू हायर न्यू पर्सन. सो इट वाजंट एन इंटेंशनल वो कि मैंने छोड़ दिया है. इट वॉज समथिंग दैट हैपेंड एंड एट द सेम टाइम ऑब्वियसली बिकॉज दिस वॉज देयर एंड दिस वॉज कंटिन्यूइंग, तो इट वॉज ऑलरेडी किक्ड ऑफ, राइट. तो इस तरफ मेरा सारी एनर्जीज लग गई. आई वॉजंट गोइंग टू स्पेंड माई टाइम and waste my time on something that cannot happen right now. And then what happened was then I got pregnant. And then I had a baby. And if I already have all this on my plate, it's not wise कि मैं pregnant हो गई हूँ, मेरा बेटा हो गया है, मेरी podcast भी है, मेरा business भी है, मेरा blog भी है, और मैं इस point पे अब एक clinic join कर लूँ. So it was a very natural progression of letting go of that. But so because I never made that conscious decision of letting it go, I don't know that if I have closed my doors on it yet. You said that you got niqabified in 2014 when you were 21 years old, yes, right? And then 4 years break and then got married. 2 years. 3 years. 2017 में हुआ है. Is that something normal in the community? Yeah, it was something from your parents' side. What was going on? Normally लोग ये कहते हैं यार अगर निकाह हो गया है, हाँ जब आपकी engagement होती है then there is a gap. But normally निकाह के बाद वाला process बड़ा जल्दी होता है. In your case this is like a 3 years time. I'm just trying to understand why it was there. What were you thinking? Yeah, what were you were studying? Yes, you will be studying. What were like some of the concerns from your parents? Because in our case our parents are very possessive and they are very critical of कि यार हर चीज़ perfectly हो ताकि बेटी सही घर में जाए, कोई इश्यूज ना हो. बट देन अगेन फ्रॉम द बॉय साइड देयर इज दिस प्रेशर कि यार निकाह हो गया तो जल्दी शादी क्यों नहीं हो रही. सो व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, व्हाई दिस 3 year गैप? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ रही थी, ठीक है. LMDC में थी, मुजम्मिल इस्लामाबाद में थे, मैं लाहौर में थी. सो I couldn't get married and live with them अभी. There was no point कि अगर मैं रुखसती करती. लेकिन निकाह क्यों हुआ था? इसलिए कि एक तो जब मेरा रिश्ता आया तो माई मदर आस्क्ड के डू वी वांट के एंगेजमेंट हो या फिर निकाह हो. तो तब मैंने अपनी अम्मी को बहुत क्लियरली ये कहा था कि मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी. और उसकी वजह ये थी कि बिकॉज मुजम्मिल एंड आई न्यू ईच अदर फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो हमारी बेसिकली वी रिलेटेड. We're not cousins. No, we're not cousins. Okay. But we're related. Like cousins of cousins, yeah, cousins, friends, yeah. Because I have seen your photos with him somewhere. Yeah, bachpan ki. Yes, bachpan ki. So seems like you guys are like hanging out. Photos mein hai. So seems like bachpan ke dost ya neighbors ke. What's going on there? So like basically, I'll tell you. He's actually my mother's cousin. Oh. He's not my cousin. He's not my second cousin. He's my mom's cousin. Okay. ठीक है. एंड विच इज़ वाई, बट हमारी जो थी, हमारी रिलेशनशिप कभी उस तरह की थी नहीं. बेसिकली आप, मेरी अम्मी जो है वो फैमिली की सबसे बड़ी हैं और मुजम्मिल सबसे छोटे कज़न हैं, विच इज़ वाई मुजम्मिल फेल इनटू आवर जनरेशन. सो मुजम्मिल और मेरी अम्मी में एक पूरे जनरेशन का गैप आ गया, बट दे आर कज़न्स. क्योंकि वो लोग भी इस्लामाबाद में होते थे. वी स्पेंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम हियर एज वेल. तो हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा थी. तो हम भी एक दूसरे को जानते थे. विच इज़ वाई व्हेन माई मॉम आस्क्ड मी कि निकाह करना है, एंगेजमेंट, तो मुझे पता था कि अगर हमारी सिर्फ एंगेजमेंट होगी ना तो चीज़ें बहुत ऑकवर्ड हो जाएंगी. बिकॉज व्हेन यू आर एंगेज्ड यू आर नॉट ऑफिशियली मैरिड. और मुझे पता है कि फिर वो मेरी फैमिली में ना एक बहुत वियर्ड होगा. पहले तो इतनी दोस्ती थी, लेकिन अब क्योंकि एंगेजमेंट हो गई है तो हम उस तरह इंटरेक्ट नहीं कर सकते. इट्स जस्ट लाइक पहले बड़ा मज़े से इंटरेक्ट कर रहे थे, अब क्योंकि लाइक आई सेड अब वो उस तरह प्लेटोनिक नहीं है तो आप उस तरह इंटरेक्ट ही नहीं कर सकते जब तक. एंड आई wasn't going to be comfortable with that anymore. जबकि हम पहले मिलते थे, आराम से मिलते थे, nobody bat an eye. Now the whole family will bat their eyes.
So I was like कि नहीं मुझे निकाह ही चाहिए because I don't want कि अब जब मेरा कोई एक्चुअल रिश्ता है इस इंसान के साथ तो मैं उससे बात ना कर पाऊँ. अजीब हो गया. अजीब हो गया. अब जब रिश्ता जोड़ रहा है और now you are all of a sudden restricted. जबकि आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना और अब आपको रिस्ट्रिक्ट होना है because engagement is not actually a real thing, right? निकाह is. तो this is what I said to my mom. जहाँ आपके concerns की बात है families के, our families knew each other, so there was no such thing. My mother loves मुज़म्मिल and she loved him at that time. In fact जब रिश्ता आया तो वो बड़े उन्होंने इससे पूछा हमना ये like उन्होंने पूछा कि यार ये करना है तो उनका दिल चाहता है बस तू कर ले. So but she was scared that I might say no and stuff. तो हाँ, so she was very comfortable with him. She trusted him a lot and we trusted the families. So that's why this was like that. But now I think if it was a completely strange person, मैं भी कभी निकाह ना करती start से. In fact मैं probably उस time पे कहती listen like पढ़ लूँ, yes, फिर देखा जाएगा. But वो situation ऐसी थी कि फिर कर लिया. And I had a really good friendship with Muzammil. So when the rishta came, I was not going to destroy my friendship with him also. So I had to make the decision whether I want to do this or not. And if I wasn't going to do it, I know that it was going to destroy my friendship with him as well. But I wanted to do it. I was happy with it. Since you are very well read and very well informed, what do you feel like who should marry who? Like just like your perspective, what do you feel like? What would be your suggestions ke who should marry who? Like an entrepreneur should marry an entrepreneur and a content creator should marry a content creator. Yeah. What's your thought on that? And when is, what do you feel like, when is the right time to get married in the first place? Because it's a huge responsibility. हम क्या करते हैं, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान शादी करा दो. That's end of story. I'm talking about most of the Pakistan, and जब आप नॉर्मली मोस्ट ऑफ द पाकिस्तान की बात करते हो तो फिर जनरलाइज भी हो जाता है. नॉट एवरीबडी इज़ लाइक दैट, बट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट, राइट? सो व्हाट्स योर ओपिनियन? आपको क्या लगता है कि कोई लड़की के पर्सपेक्टिव से, चलें बता दें, बीइंग अ फीमेल, अगर आप लड़की के पर्सपेक्टिव से बता सकें कि क्या कोई एज है, कोई ऐसा गोल्डन नंबर कि यार यही एज है, या करियर, हाउ मच इज़ career important in terms of like your studies, and then आपको ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है, how much that is important comparatively to नहीं आप married, जल्दी से शादी कर लो. So what's your thought on that? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत लोग पूछते भी हैं ये सवाल, और हमने अपनी पॉडकास्ट में काफ़ी दफ़ा एड्रेस भी किया है. I don't think that there is a definite number that I can give here कि इसी टाइम पर शादी कर लेनी चाहिए और लड़कियों के पर्सपेक्टिव से. But see, it's about, मैं हमेशा कहती हूँ कि it's about what you want from your life, because you will only regret when you got married if that was not a decision that you took with considering a few things. जिसमें मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप, हर इंसान जो है डिफरेंट होता है. If you are somebody who is very career oriented, who feels कि उनको अपना career pathway बनाना है, figure out करना है पहले और उस पर focus करना है, and they do feel कि अच्छा getting married is a lot of responsibility or it will create issues for them, I think, and you feel that will happen, then I think that you should get married when you think that okay, you are in a place in your career where you can take on more responsibilities, and you know, but if you are the kind of person who, and then I always ask this, हमारी एक एपिसोड हुई थी डियर सिस्टर, हमारी पॉडकास्ट हैप्पी चर्प में, हाँ, तो उसमें जो 2 लड़कियां मेरे साथ बैठी थी, दे वर नॉट मैरिड. सो उनसे मैंने ये पूछा था, एंड आई सेड कि दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप see, when you get married earlier in life, then you can build your pathways in a more aligned way. When you are, जब आपका अपना करियर और अपनी चीज़ सेट है ना, then it's very difficult, then you're not sort of, एक होता है ना कि खुद चीज़ें मिल के बिल्ड करना, मिल के स्ट्रगल करना, मिल के घर करना. अगर आपके लिए वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, and you think that you want your partner to be with you in this and know what you're growing and becoming, then it's better to marry at a time where you're not completely there, because then it becomes very difficult to sort of understand where the other person
why the other person has this kind of career or this kind of life. जब आप एक साथ build कर रहे होते हो एक चीज़ को, तो आपको एक दूसरे की काम की और एक दूसरे की लाइफ की ज़्यादा समझ आती है. Why this person is the way they are, उनकी career में progression क्या थी, उनकी life में progression क्या थी. However, again, हर किसी का अपना होता है. If you don't want that sort of thing, if you want कि this is completely yours and you don't want that, तो फिर आप. बट इन योर केस आपके पार्टनर तो आपके बचपन के दोस्त थे, राइट? यू न्यू हिम वेरी वेल, बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जब पेरेंट्स की तरफ से ये होता है कि यार बेटा शादी कर लो, तो ईदर इट इज़ अरेंज्ड मैरिज, राइट? सो इन दैट केस हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दैट द पर्सन दैट यू आर मैरिंग would be there to grow with you? You never know कि उसके क्या pathways हैं, उसके जहन में क्या चल रहा है, whether he wanna have like a housewife or a career oriented wife, like what should like it's unfortunate that girls don't get that opportunity and that liberty कि वो explore कर सकें, वो time spend कर सकें outside as a friends, to talk to each other, to explore each other, to see ke yaar whether this person is the right fit for me in the first place or not. So how would you like then judge or study the other person whether you can grow him with him or not? I think that there is no way to judge someone without having a communication. Yes. जो आपने बात की वो communication तो ज़रूरी है. And I think that's what I've seen change a little bit कि अब arranged marriages में ये हो रहा है कि अच्छा दे. बट वो कहाँ तक हो रहा है यार? वो क्या होता है? बहुत कम. जाओ बेटा ऊपर जरा मिल के आ जाओ, यार जरा वो कैफे एक मुलाकात में और आप डिसीजन दो. Yes. And I think that एक मुलाकात में तो मैं आपको अपनी बेहतरीन साइड दिखा दूंगा, आप मुझे बेहतरीन साइड दिखा दोगे, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ईच अदर देयर नीड्स टू बी अ रीजनेबल टाइम. There needs to be a reasonable time, definitely. And I think but I think time isn't the only thing, because you can have all the time to interact with someone, and if you're not asking the right questions, if you're not like, I think ये understand करना कि आपको अपनी life और अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए बहुत ज़रूरी है. because जब तक आपको वही नहीं पता ना, आप अगले बंदे से किस तरह जज कर सकते हो कि ये बंदा मेरे लिए ठीक है या मेरे लिए ठीक नहीं है. So that understanding, I feel like जो बहुत young marriage है, I would be against that for that reason, because young, when you say young, like up till which age? I'd say 22, 23 is quite young. जबकि मेरा निकाह हो गया था 21 में, but I would say no, because I think you need to have that sort of understanding of yourself first, because only then you know what you want from your partner. And it's also very important to understand कि in a marriage what you are willing to bring on to the table and what you expect the other to bring to the table. और जब तक आप वो conversation नहीं करोगे, वो communication नहीं करोगे, आपको नहीं पता चल सकता. I think वो यही होता है कि hit and miss होता है लोगों का. It's like that. But I would say कि अगर आप love और arranged marriage की बात करें, तो in a lot of situations love marriages में क्या होता है, because love marriage में emotions involved होते हैं. जहाँ emotions involved होते हैं ना, तो सवालों के जवाबों से you can't make a rational decision. But when you fall in love with somebody, you have spent enough time with them to fall in love, right? Yes, but you have a higher chance of getting into toxic loopholes where you let go of red flags, because you are clouded by your judgment is clouded by your emotions. When it's an arranged, that's why I feel like it's so important to have those conversations in arranged marriages. आप love marriages are purely, most of them, जो अगर स्पेशली अगर थोड़ा पहले हो जाए, यंग एज में हो जाए, दे आर वेरी मच बेस्ड प्योरली ऑन इमोशंस. और वो इस तरह के इमोशंस होते हैं, जस्ट लाइक आई एम गोइंग टू सैक्रिफाइस एंड डू एनीथिंग एंड कॉम्प्रोमाइज फॉर दिस पर्सन. Yes, 100% at that time, and in such young age as well. So do you feel like love marriages at young ages will fall apart? I wouldn't say they'd fall apart, but I think that the chances of them falling apart, the probability is high. I think you could have a lot of problems. In your experience around, in your circle or the circles of your friends or your network, what do you feel like the trend is like, if I were to ask you? Okay, so I've known people who've had love marriages, and they've had those kind of love marriages जिसमें उनके बहुत पुराने relationships थे. They got together very young, और बहुत लंबा अरसा उन्होंने साथ गुजारा है, और बहुत लड़ के उन्होंने शादियाँ भी की हैं. Yes. And so far, I hate to say this, but so far they are
are not in the best place. Because वही चीज़ें that they were willing to compromise on, they are becoming a point of contention in the marriage. क्योंकि आप किस point तक वो चीज़ें कर सकते हो, right? आप बड़े होते हो, because at the end of the day शादी से पहले it's purely emotional. शादी के बाद there are responsibilities. And if you are to share responsibilities with someone, then you have to like meet halfway. You can't put like burdens on one side or expect more compromise from one side, and just a lot of things. And मैं ये देखती हूँ कि in those relationships, those red flags were so evident from before as well. जिसमें आप ये भी देख लें कि ड्रग्स के इश्यूज़ हैं इस तरह के, आपको पता है पहले से. अगर आप अरेंज्ड मैरिज में हो, आपको अगर पता हो अगला बंदा ड्रग एडिक्ट है, वुड यू मैरी दैट पर्सन? बट आप जब लव यू पीपल डू blindfolded. Yes, you're like, it's fine, I will accept you and love you for whatever you are. Yes. But when life happens and when you have responsibilities and you have kids to raise and you have a household to manage, you cannot live with a drug addict. Your life is ruined. So I would say that I wouldn't say, मैं ये नहीं कह रही कि arranged is better than love, but I'd say whether it's love or arranged, think clearly, have better communication. Do you think there should be a hybrid model, like arranged with like in your case, if I look at your story, you guys knew each other from the get-go, from a very early age. You were friends, you were hanging out, your families were friends, and then later when this opportunity come along कि यार अब शादी है, तो you didn't have like a better option because आप जिसके साथ बड़े हुए हो, you know the personality of your partner beforehand, right? कि आपको वो सारे जो है कोई guess work नहीं है, कोई numbers नहीं है, you have like real data on him and he has real data on you. Right? So how do you feel like कि पाकिस्तान की society में, let's not go towards the very extremes. Let's talk about the average Pakistani young boy and girl. Like how would the hybrid model work from them, where parents are like a bit reluctant कि now the guy and girl will like spend and talk on phone for a month or two. Parents बड़े reluctant होते हैं. सबसे ज़्यादा which I feel like is this restriction from the parents कि उनको समझ नहीं आ रही होती है. They say like कि यार शादी के बाद सब कुछ खुद ही सही हो जाएगा ना. You guys have plenty of time after getting married to understand each other, to talk about your stuff each other and figure it out. So how you feel like the hybrid model should work, जिसमें arranged वाला element भी हो, जिसमें love वाला element भी हो, to make it a balance? I think, see, because parents have this really hard stuck attitude towards their kids कि they can't see people or talk to people, or उस वजह से they are not able to understand that aspect of their children's life. अगर वो open हो जाए ना with their kids about these conversations, they will actually have some form of control in the person that they are interested in. Right? तो वो आपके साथ शेयर भी करेंगे कि अगले बंदे ने क्या बोला या क्या हुआ या आप कहाँ गए. अभी तो वो शेयर ही नहीं करते, which is why they might end up in really bad situations, because obviously your parents are more mature. Right? अगर आप किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते अगर वो आपसे छुपाई जाए. सो पेरेंट्स अगर ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लें कि वो अपने बच्चों के साथ भी ओपन हो जाए और उनको कम्युनिकेट करने दें और अपनी भी बच्चे के साथ कम्युनिकेशन हेल्दी रखें, तो दैट विल वर्क आउट फॉर एवरीवन. बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि अगर पेरेंट्स बहुत सारे रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकें इन समबडी दैट देयर डॉटर हैज़ नॉट मैरिड येट, बिकॉज अगेन बच्ची के इमोशंस से उसकी जजमेंट भी क्लाउडेड है और वो है. So things can be very different. आप आजकल देख रहे हैं, I think a lot of parents, I hope, have learned this lesson from what we've seen recently about the women who are getting killed and murdered by their husbands, and you have seen that it's not just in a certain class, it's like everywhere. So maybe we can, I don't know, understand and open this conversation up कि आप शादी के बाद तक का वेट नहीं कर सकते, बिकॉज फिर तो आपके पास बिल्कुल ही नहीं कंट्रोल. आपने तो शादी करके भेज दिया ना अपनी बेटी को,
आपके पास क्या कंट्रोल है? कुछ भी हो Yes. सकता है, कुछ भी हो सकता है. And the fact is that because you close your doors on your daughters, they don't tell you. You never built that communication. You don't know what's going on with them when they're married. So let them talk to those people when they are in your control. Yes. So जब रिश्ता आता है, अरेंज मैरिज है, आप उनको बात करने दो, अपनी कंट्रोल अपने सामने होने दो, उनको मिलने दो, उनको बात करने दो, उसको शेयर करने दो, वो क्या फील करिए, क्या हो रहा है, उसने आज क्या बात कर दी थी, क्या हो गया था. इट विल बी वेरी क्लियर टू एवरीवन. बट देन पेरेंट्स को भी थोड़ा, जो नॉर्मली अक्सर मैं ये बात करता हूँ जब हमारे कोई साइकोलॉजिस्ट गेस्ट आते हैं और जब वो चाइल्ड डेवलपमेंट पर और चाइल्ड और पेरेंटिंग पर बात करते हैं ना, then you came across के mostly parents in Pakistan like not trained, they're just like traditional parents, right? उनको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है, right? मेरे ख्याल में तो in order कि उनको ये हो कि अपने बच्चों को space दें, सही है, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें and be friends with your kids, while traditional parents doesn't do that. They don't do that. वो तो कहते हैं कि भाई ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने इसको पढ़ा के लिखा के और राइट एज में इसकी शादी कर देनी है ताकि इसका घर आबाद हो जाए, राइट? While the things that you are talking about, parents need to get proper education, yes, right, in parenting. So आपको क्या लगता है कि parenting का paradigm पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों से बेहतर हुआ है? Right now we are like in 2022. आज 2010 की अगर मैं बात करूँ, how different it is now. Parents are really getting trained, getting better and understanding their kids, or is it the same thing that used to be there in 2010 and 2090s? आई थिंक आप जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि सोसाइटी की बात है, कम्युनिटी की बात है, एज की बात है, सिटी की बात है. बट आई वुड से कि येस ऑफ कोर्स डेफिनेटली इट्स गेटिंग बेटर. आई नो, मतलब आप विद एवरी जनरेशन दिस गेट्स बेटर एंड दिस ओपन्स अप. और वो यही होता है, बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है. आपके पेरेंट्स ने लर्न किया अपने पेरेंट्स से कि हमारे पेरेंट्स ने यूँ किया, हम अपने बच्चों के साथ यूँ नहीं करेंगे. बट आई थिंक वन ऑफ द वाई दीज थिंग्स हैपन इज़ कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करना चाहते. इट्स दैट, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे पता है, ठीक है, एंड आई नो कि बहुत दफ़ा most of the things that are causing these problems, they are not out of anything wrong, but the fact that parents constantly feel the need to protect their children. Yes. And in trying to, and they don't just try to protect them, they get lost when they are very focused on what the society thinks. कि मेरे बच्चे के, जब उनको बच्चों की इज्जत की ज़्यादा परवाह होती है ना, तब मसले होते हैं. क्योंकि तब वो उनसे वो कराते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं जिससे सोसाइटी खुश रहेगी. तो वो जॉब ये करें, वो पार्टनर ऐसा चूज़ करें, वो बात ना करें, वो मिले ना, क्योंकि चाहे वो अपने बच्चों को जितना भी ट्रस्ट करें, या उनको शायद ये बात, उस बात की टेंशन नहीं है कि वो अगले बंदे को भी शायद ट्रस्ट करते हो, लेकिन क्योंकि सोसाइटी बात करेगी तो वो ना मिले, तो इस तरह ना हो. तो आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट एज अ पेरेंट टू अंडरस्टैंड कि लोगों के बारे में टेंशन ना खाएं. वरी अबाउट योर चाइल्ड, कि आप अपने बच्चे के लिए क्या क्या कुछ ख़राब कर रहे हो सिंपली बिकॉज यू वरी टू मच अबाउट व्हाट अदर्स विल से अबाउट योर चिल्ड्रन. ये कौन सा जीन है, हम साउथ लोग क्या कहेंगे वाला जो प्रॉब्लम है, ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, इंडिया में, और जो हमारा सब कॉन्टिनेंट का बहुत मस्त. ये do you think it's like a colonial mindset, something like that? Because when you go out of this continent, आपको ये चीज़ मतलब कि ना होने के बराबर दिखती है. नॉट नेसेसरीली. आई थिंक कि वहाँ पर भी कुछ जगहों पर ये चीज़ें हैं, लेकिन हाँ हमारे यहाँ तो, एंड आई थिंक इट ऑल्सो हैपन्स बिकॉज हम लोगों का सिस्टम बहुत फेमिलियल है. तो जब आपकी लाइफ में आपकी चचा, फूफो, खाला, मामू की इंटरफेरेंस इतनी होगी और आप इतने क्लोज सर्कल्स में रहते हो, तो आपको फ़र्क पड़ता है कि वो आगे पीछे क्या बोल रहे हैं. आई थिंक इंटरनेशनली बिकॉज देयर सिस्टम्स आर नॉट सो फेमिलियल, दे डोंट रियली केयर कि कौन क्या, माँ बाप से वो इतना कम मिलते हैं, लेट अलोन के कोई और क्या सोच रहा है उनके बारे में. तो आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स. एंड ऑल्सो आई थिंक जितने द हायर द स्टेक्स, जिस तरह जितना कोई फेमस है या जितना कोई आई डोंट नो अच्छी स्टेटस पे है, वो उतना ज़्यादा उसको अपने बच्चे का ये होगा कि कुछ वो गलत ना करे या यूँ ना करे, या सोसाइटी में कोई नाम है या कुछ है. बट वही बात है, it's you have to realize that you can't, because of your fear of what people will say, you cannot ruin your children's lives. Stop them from doing what they want to do, stop them from
you know. Yes. तो आप खुद भी पेरेंट हो गए हो. How is life treating you after like 1.5-year-old, yeah, right? 1.5-year-old. Yeah. So how has life changed over this like last 20 months? Oh, dramatically. क्या आपको क्या लगता है? आपके बच्चे हैं? मेरी दो बेटियां हैं. One is like 5 years old and the other one, when was your son born? He was born in 2021 March. My second daughter was born in May 2021. अच्छा. Yes. So 2021? Yes. Yes. So जो मेरा दूसरा baby है, she's almost like close to the age of your son, right? So do you feel like your movement is restricted, your life is restricted, like फ्रीडम चली गई है, रात को डायपर भी चेंज करना है, दूध भी पिलाना है, फिर नींद भी पूरी नहीं है, एंड देन आई एम अ फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, आई हैव टू हैव दिस livelihood as well to support my partner. How things are getting like tougher for you for the last 20 months? And how you're keeping a balance? I don't think I'm keeping a balance, to be honest. मुझे ऐसा लगता है कि because from your stories on Instagram and from your posts on Instagram, people can say that you are having like quite a life. Yeah, like now maybe. But मेरा आप पहले साल में my content was it was plummeted like वो a lot. आपको पता नहीं है शायद कि बच्चे से पहले मेरा कैसा कंटेंट था, बिकॉज आई वॉज जस्ट देयर, लाइक आई वॉज on point with my content. I used to create videos all the time. I was on stories. I was like regular. I had an amazing connection with my followers. But after I had a baby, it was all gone. It's all gone. For me, अगर आप मुझसे पूछें तो जब मेरा बेटा 1 साल का हुआ है, उसके बाद से I started actually feeling like myself. Because मैं अगर आपको अपनी सबसे बड़ी स्ट्रगल बताऊं, वो ये है कि after becoming a mother, I just felt like that is the only thing I know. The most difficult job in the world. I thought I just know how to be a mother. I felt कि मुझे उससे पहले जो कुछ मुझे करना आता था वो मुझे नहीं आता. And obviously आपका postpartum है, आपकी mom brain है और ये सारी चीज़ें होती हैं, and they're very real. Like मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था. I lost all my confidence, my self-esteem to show up on camera. It was a struggle for me. मुझे आंसू आ रहे होते थे. And the reason that self-esteem was completely low. Confidence because of your body is not like that anymore, या क्या है, कुछ hormonal changes body में हो रही होती हैं, what's going on there? Because you're a doctor, so you can tell us much better. Okay, so I'll tell you. पहली चीज़ तो body is just one aspect of it. होता ये है कि basically जब when you have a baby, आपके जो hormones होते हैं औरतों के, वो पहले एक certain high में होते हैं, and right after you give birth to a baby, they dip, which basically causes a lot of lack of being able to feel good and feel happy. So basically it's like a chemical imbalance that causes you to feel really down, really depressed. And is it with like every single woman? Yes. Okay. Yes. So you feel, और अब आप उसके ऊपर ऐड कर दें स्लीप डेप्रिवेशन, अब आप उसके ऊपर ऐड कर दें मॉम ब्रेन. अब मॉम ब्रेन क्या चीज़ है? मॉम ब्रेन ये चीज़ है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है ब्रेन की, यानी कि ब्रेन हैज़ द एबिलिटी टू चेंज, physically change. And what happens after birth is कि it's an evolutionary thing कि जब बच्चा होता है तो माँ का जो brain है वो change होता है, और उसमें क्या होता है कि you cannot function properly because evolutionary उसके अंदर जो advantage है वो ये है कि you can only focus on the child. You can hear the child more. आपके जो hearing sense है वो बच्चे की आवाज़ के लिए ज़्यादा हो जाती है. आपको बाकी चीज़ें समझ नहीं आती because your brain is just focused on that. तो अब आप सोचें कि मेरा काम ये है कि मैंने लोगों से बातें करनी है, मैंने मीटिंग्स रन करनी है, मैंने चीज़ें प्लान करनी है, मैंने जाके अपने एम्प्लॉयज़ से बात करनी है. और आप सोचें मैं जाती थी ऑफिस और मुझे ब्रेन फॉग, मुझे कुछ समझ नहीं आता था. कपलिंग दैट विद द फैक्ट दैट आई एम स्लीप डिप्राइव्ड. मैं एक सेंटेंस नहीं बोल सकती थी पूरा, आप शायद यकीन नहीं करेंगे बिकॉज आई एम स्पीकिंग सो मच, बट मैं एक सेंटेंस पूरा नहीं बोल सकती थी विदाउट फम्बलिंग और विदाउट, बिकॉज मेरे जहन में जो थॉट होती थी, जो वो निकलती थी ना, वो एक कुछ अजीब ही निकलता था. एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी अंटिल आई फाउंड आउट दैट इट्स अ वेरी रियल थिंग एंड इट हैपन्स टू अ लॉट ऑफ women, एंड अ लॉट ऑफ women डोंट नो दैट दिस हैपन्स. तो
For me, obviously, if I can't speak properly, my confidence is low. I feel dumb and stupid because मेरे comprehension skills भी कम हो गए थे, मेरे speaking skills भी कम हो गए थे. आपका postpartum hair loss होता है, आपके बाल गिर रहे हैं, आपकी body सही नहीं है. So it's a very difficult time for a woman. I would say though, alhamdulillah, that I was able to still show up and I was still able to do things. 7 months I had absolutely no help क्योंकि I did not have help with the baby and I did not have my in-laws. घर पे कोई भी नहीं था. So I would just be alone at home. So a first-time mom who don't know how to handle these situations and you're figuring it out, you are obviously you will be looking something at YouTube and Google as well कि ये particular situation में किस तरह behave करना है, या बहन को कॉल लगा लो या मम्मा को कॉल लगा लो या in-laws को कॉल लगा लो अगर वहाँ पर कोई अच्छी in-law और सहेली भी है और जिसने पहले बर्थ दी हुई तो किस तरह हैंडल. सो यू आर लाइक गेटिंग हेल्प फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू आर अ गुड मदर. Yeah, I guess. But मैं आपको एक बात बताऊँ, like I said कि मुझे motherhood समझ आती थी, मैंने उसको बहुत enjoy किया है. But as soon as I used to step out of that role and try to be who I used to be, and I wasn't able to do that, that depressed me. कि यार मुझसे क्यों वो चीज़ें नहीं होती जो मुझसे पहले हो जाती. Like I could speak well, I could run meetings, I could make decisions. I can't do those things anymore. I just couldn't. और साथ ही mom guilt होती है आपको, आप बच्चे को सही attention नहीं दे रहे. फिर 6-7 months so I was completely with him and उसके बाद मैंने फिर एक nanny भी रखी और फिर मेरे in-laws भी वापस आ गए. So suddenly I had a lot of help with You say that you were very good at this motherhood thing. How? Like I don't know, came naturally. Is it like, have you asked your friends as well who are parents ke was really that the case with them as well? Because for a first time mom, how would she know that wow ये तो बड़ा मजे का काम है, ये तो मुझे instantly लगता है, implicitly लगता है कि ये तो मुझे आता है. I wouldn't say कि मुझे आता था. I would say मैंने enjoy किया था. मैं ये नहीं कह रही कि आसान है. Did you enjoy the sleepless nights? No, मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल बहुत आसान था. मैं आसान नहीं कहूँगी, मुश्किल था. लेकिन मैंने I loved the time that I spent with my baby. I really enjoyed his milestones. I used to love being with him. I used to love taking care of him. Of course, it comes with its challenges of breastfeeding and sleepless nights and all of these things, and that is very hard. I am not going to say that's easy because then people will be like, you know, that's not true, and it is not true. Like it's not easy. Because most of the Pakistan को ये लगता है कि बच्चे पैदा करना it's not that much of a big deal. No, it's very hard. Because as a somebody who is never married, उसको दूसरों के बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, 5 मिनट उसके साथ खेलता है and then वो चला जाता है. And उनके parents को पता होती है how difficult it is to deal with kids. No, it was very hard, I would say. But the thing is that I liked it, I could understand it, and I enjoyed it. And I wanted to understand. Like एक होता है ना कि I'm the sort of person जैसे अगर even at workplace it was I like challenges. I like problem solving. वो work पे आती थी, I would do it. That's what used to make me feel good. But like I said, मुझसे वो work पे नहीं हो रहा था. लेकिन when it came to the challenges of motherhood, the challenges were there, but I was also solving them. And I was doing it. And which is why I think that drove that sort of, so that I was more confident there because I was solving those problems. I was making those decisions. I felt very empowered in that mother role. But outside of the mother role, because I was unable to focus, I lost touch, मैंने छोड़ दिया था. और जो भी मैंने आपको सारे issues बताए हैं, I found it very hard to feel like myself. I just felt like a mother. That's it. आपको क्या individuality ख़त्म हो गई थी, बस माँ थी मैं. That's why. आपको क्या लगता है कि do husbands really understand कि how difficult it is to raise a kid and can help that? How do you find in your case, like your experience? Because लोगों को लगता है कि बच्चे पैदा करना और बड़े करना सिर्फ औरतों का काम है. Husbands can play a role. Huge. What kind of role? Like if that you have experience and you think it's important कि husbands should play to empower their wives. देखिए, I would say कि because I understand the fact कि अगर like the husband works and he has to go to work and he has to do things,
that's justified. He has his work, fine. But that doesn't mean that just because, you know, he's going to work and coming back from work, he has no role to play here. Obviously, he cannot, there are so many things that a man cannot do, physically cannot do for the child, but there's so much he can do for his wife. So all the small things, as simple as के उसको एक तो और worries और tensions ना देना. Also being involved. Diapers तो कोई भी change कर सकता है. ठीक है. बोतल से दूध तो कोई भी पिला सकता है. बोतल धो भी सकता है. You know, sterilize कर सकता है. Cradle भी कर सकता है. सुला भी सकता है. So I think, and that's like, oh, that's being a father. That's just being a parent. There is nothing, उसमें ऐसी कोई ऐसी साइंस नहीं है जो कि सिर्फ एक माँ करे. And where you can step up, you should step up. There is no reason for a father to not step up and do those things. However, I think it's also important to understand that जो मैंने अभी आपको सारी बातें बताई हैं, अगर ये लड़कों को पता हो कि यार this is what your wife is going through or feeling, and the fact is कि बहुत सारी लड़कियों को नहीं पता कि this is the biology behind it, or this is what happens. So I think they can empathize and they can help them, and they can maybe, you know, give them some kind of rest and some kind of support in that. But I think वही बात है कि जब उन्हें पता चलेगा कि कितना मुश्किल है, जो आपने कहा कि उन्हें पता ही नहीं है. True. तब उन्हें तब पता चलेगा जब वो करेंगे. Like my husband, like he understands how difficult it is because he was present and he tried and he realized यार ये तो बहुत मुश्किल काम है. लेकिन अगर आप अपनी ही ज़िंदगी में हो और अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो तो obviously आपको थोड़ी पता चलेगा. You will come home and if the baby is fed and the baby is sleeping and the baby is happy and the baby is fine, you'd think, oh, it was like that all day. But that's not true. Not at all. That's not true. It is a lot that happens, and especially I think during the nights, a lot of the, क्योंकि सुबह काम पे जाना होता है तो a lot of the men they are sleep at night. But जो रातों की struggle है वो बहुत मुश्किल है. And I'm not saying that all men do that. I'm sure that there are partners जिन्होंने किया है and that have stepped up and they know कि कितना मुश्किल काम है. जब आपने कहा ना कि ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे के लिए इतना करो, but for the mother you said empathy, you said support. मतलब कि सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च सब कुछ सही हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ. What exactly explicitly you mean by supporting your wife? Like सिर्फ भाषण दे करी या क्या? देखिए, एक्चुअली एक होता है इनविजिबल सपोर्ट, जो कि आप चुप करके बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हो. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल लाइफ में अगर आपका बच्चा नहीं है तो probably if my husband comes home and he has his stresses or issues or problems, he will discuss them with me or he will tell me the problems. But invisible support में होगा कि he will realize that this is not a good time and I know that she's going through, इस वक्त मैं इसको और tensions ना दूँ. That's invisible support. Another kind of invisible support is कि क्योंकि बहुत सारे घरों में तो ये होता है ना कि आप घर आए हो तो आपकी बीवी आपको खाना लगा के दे और ला के दे, वो चीज़ें आप छोड़ दो. दैट्स व्हाट आई मीन बाय सपोर्टिंग द वाइफ. अगर आप बच्चे को नहीं देख सकते, आपको नहीं समझ आती, तो आप यही चीज़ें कर लो. यू नो, आप डू figure your shit out at least, so that your wife doesn't have to figure that out for you. At least she doesn't have to do that. That's one kind of support. But I would say bhashan is necessary. The woman needs to feel that he sees you, that he sees the fact कि ये बहुत मुश्किल है. And I think कि validating that for your wife is essential. Because if you're not going to do that, she might not think कि आपको समझ भी आती है कि उसकी struggle क्या है. So appreciating, validating, and is very, very important. But in the case of those partners, both are working, both are collaborating, both are like the breadwinners of the family, right? तो मेरे ख्याल में क्या फिर 50-50 हो जाता है, क्योंकि आप भी अर्न कर रहे हो, हस्बैंड भी अर्न कर रहा है, जितना वो बिजी है उसका वर्क प्लेस स्ट्रेस है उतना आपका भी है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट डू यू फील लाइक कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फादरहुड की और मदरहुड की, दे डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली या नहीं? फिर भी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में नॉर्मली बोझ जो है वो मदर पर ही रहता है. देखें, मैं ये कहूँगी कि एक
घर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं करने वाली, एंड जब बच्चा हो जाता है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती हैं. सो आई थिंक आई वुडंट, मैं उसको 50-50 इस तरह से कहूँगी कि यू बिटवीन the partners and whatever their system of running their home is, they need to figure out how they make that 50-50. कि कौन सी चीज़ें कौन करेगा, whether that means कि entire parenting वाली चीज़ अगर माँ कर भी रही है तो what is all that the man is able to handle in that case. तो मैं अपना आपको एग्जाम्पल देती, क्योंकि मेरा एवरेज कपल नहीं है. सो हम लोगों का ये था कि हम दोनों कंटेंट क्रिएट करते हैं, दोनों का कंटेंट है. सो हम लोगों के केस में ये था कि देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हम दोनों पैसे कमा रहे थे, और हमारा प्रोजेक्ट बेस्ड काम होता है, पार्टनरशिप्स आती हैं, हम दैट्स हाउ वी मेक आवर मनी. द पेड प्रमोशंस, या पेड प्रमोशंस आती हैं, राइट. बट इफ आई एम मिसिंग ऑब्वियसली पेड प्रमोशंस मेरे एंड पे तो कम हो रही हैं, राइट. एंड आई डू अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ work that brought a substantial amount of income. So for my husband, he could not then he had to work extra hard to make sure that income utni hi rahe. So he is working extra hard to ensure कि अच्छा he gets more projects and he does more and he puts in that more effort. And I saw my husband do that. कि he was working extra hard to make sure कि अच्छा पैसे तो ना कम हो जाएं, बिकॉज द वाइफ इज़ नॉट अर्निंग एट द मोमेंट. नॉर्मली लोगों का ये होता है कि क्योंकि अगर बीवी भी कमा रही है तो वट एवर कंपनी शी वर्क्स इन, मोस्टली दे डू मैटर्निटी लीव्स, वो पेड होती हैं, उस तरह नहीं होता. मेरे केस में ये था कि फ़र्क पड़ा था उस चीज़ से, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग दोज पेड पार्टनरशिप्स, आई एम नॉट मेकिंग मनी लाइक दैट. सो आई थिंक दैट डिड बर्डन माई हस्बैंड फाइनेंशियली. अब मुझे ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि द फैक्ट दैट ही डिड शो अप एज अ फादर एंड हस्बैंड एज वेल एट द टाइम. लेकिन ये है कि आई थिंक इट्स जस्ट दैट सपोर्ट दैट अ वुमन नीड्स, बिकॉज कभी भी जो आपने कहा था ना कि कभी एक मर्द समझ सकता है या नहीं, आई डोंट थिंक कि truly a man can understand, because he is not going through internally वो he can never understand that, but he can try to do his best. And I just want to say that for all the couples, it's important to figure out their system, divide between the partners the forts that they're going to hold right now, and take the lead in that without worrying the other partner with them. मेरे ख्याल में जब तक साइंस इतनी तरक्की नहीं कर लेती कि जिस तकलीफ़ से या जिस 9 महीने के प्रोसेस से एक औरत गुजर रही है ना, साइंस ने इतनी तरक्की तो की नहीं कि बाप जो है वो माँ बन सके, राइट. तो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वे टू फिगर इट आउट कि क्या गुजर रही है. नॉट ओनली द 9 month प्रोसेस एंड इवन आफ्टर दैट. सही आप कंट्रीब्यूट करते हो, बट माँ ने जन्म दिया होता है, राइट. सही है. एक चीज़ को आप दुनिया में इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो द वर्थ ऑफ इट, द फील ऑफ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. आई एम नॉट सेइंग कि फादर जो है उनके लिए औलाद कोई कम दर्जा रखती है, बट मदर इट्स at a totally different level. 100%. But at that time you were running some businesses as well, right? Yeah. How many businesses have you failed in your career? No, because I see recently you have shut down one of your businesses. That was my only business. Okay. What business was that? It's called Inspire Me. It was a business of planners and journals. It was one of the first planner business in Pakistan that we made, and the reason that I shut that business down was it was doing very well. तो कोई मुझे कहेगा तो वो हंसेगा इस बात पे कि फिर मैंने क्यों किया, and it was extremely profitable, and I would say that I have reaped a lot from it. But I had to let it go because थोड़ा मैं आपको समझाती हूँ. Sure. मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो there were some problems that I was having in the manufacturing process. Okay. And
obviously over time. And before you tell me the specific of it, why did you start that in the first place? I started it because I generally मैंने आपको बताया कि मैं blogging करती थी. I used to write as well. So writing has been a huge part of my life from a very long time. And I understand कि writing और journaling के benefits और क्या होते हैं और planning के benefits क्या होते हैं. और मुझे आजकल के ज़माने में लगता था that people spend a lot of time on what's happening outside of themselves. So what I mean by that is कि because हम हर वक्त social media consume करें, तो we have a very great understanding and spend a lot of time understanding what everybody else is doing. And in that, I think a lot of people sort of lost themselves because they are not connecting with themselves. So what I'm trying to say कि जो बाहर की noise है वो आपके इंटरनल मोनोलॉग से ज़्यादा सुनने को मिलती है. सो जो लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस थी ना लोगों में कि वो खुद क्या चाहते हैं रादर देन कि हर वक्त बाकी लोग क्या कर रहे हैं तो वो करें. सो पीपल वर रियली लूजिंग टच विद themselves and it was affecting their mental health, it was affecting their decisions. And I know कि what writing does is कि it declutters your mind. So आपके दिमाग में अगर thoughts हैं, आपके दिमाग में अगर feelings हैं, the moment you pen them down and you write them down, आपके दिमाग में वो sort होना शुरू हो जाती हैं. इसी में मैं आपको emotional intelligence की बात करती हूँ. अगर आप पूरा दिन गुजारते हैं ना और आपकी 10 interactions होते हैं और आप 20 चीज़ें करते हैं और उन सारी interactions और उन सारी चीज़ों में there are things that you feel. And there are things that you think. But the fact is that you don't spend enough time understanding what you're thinking and feeling. You're feeling and you're thinking and you're moving on and you're feeling and you're thinking. And you're also reacting. So whatever you feel, you react. You think, you react. But actually, you are not understanding what you're feeling and what you're thinking. And what journaling does is कि जब आप बैठ के, so for example, आपने किसी को देखा और आपको उससे एक्चुअल में जेलसी फील हुई, एनवी फील हुई, लेकिन आपने रिएक्ट ऐसे किया कि आपने कोई हेटफुल बात की उसके बारे में और आपने उसके बारे में कोई बुराई की. आपने सिर्फ ये रजिस्टर किया कि उसमें कोई मसला है. आपने ये रजिस्टर नहीं किया कि आप जेलस हो इसीलिए आपको उसमें ये मसला नज़र आ रहा है. एंड दैट इज़ वाई यू डोंट लाइक दिस पर्सन. व्हेन यू सिट डाउन एंड राइट, सो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग, you start giving words to your thoughts. You start giving words to your feelings. Are you actually angry or are you actually sad? So you reacted in an angry way, but whatever triggered you, was it actually something that hurt you? So जब आप लिखना शुरू करते हो तो आप emotionally intelligent होना शुरू करते हो because you start giving words to your thoughts and feelings. So you learn to respond and not react because writing helps you understand your actual feeling, your actual thought. And does it need to be like with a physical pen and copy, with your sticky notes? So कहते हैं, from what I have studied on this so far, is कि when you use your hand and you can physically feel and you hold the pen and you write, तो again neuroplasticity वाली चीज़ आती है. It physically rewires your brain into manifesting what you write. So the thoughts in your brain start to change, how you feel about things start to change. You do a better resolve. That's what they say so far. कि जिसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग भी कहते हैं. So when you write, it's always better than typing. You are more likely to perform actions when you write them as compared to when you type them. So and when you start writing things, आपका emotional resolve भी होता है. You start manifesting those things. You reaction की जगह आप respond करना शुरू हो जाते हो क्योंकि आपको बहुत clear है in your mind what you think and what you feel and what you want to do with your life. So basic इसका ये था, which is why I wanted to create a product that can help people do that as well. तो हमारा जो product था वो बड़ा detailed था. उसके अंदर बहुत सारी self awareness और self reflection की exercises होती थी that people can do, also plan and then reflect weekly. And how long did it take to develop this product? A year. Oh wow, Yeah. A year of planning. Oh wow. It took me a year to develop the product. And everything was unique about that, the style of the book. I wouldn't say it was unique because you get inspirations from other in the market as well. That is understood. But it was a unique and I think it was unique for this country. Because बाहर बहुत लोग बहुत आगे जा चुके हैं इस चीज़ में, in journaling and writing and self awareness. यहाँ पर तो नहीं था. So I found a lot of products जो बाहर exist करते हैं that help
people do this? Very simple, like it helps you set your intention for the day, it helps you figure out how you're feeling. तो बहुत सारी इस तरह की चीज़ें. So उसमें ऐसे questions थे, ऐसे prompts थे that would sort of help you do that. फिर उसके end में आपका एक gratitude section भी होता है कि what are you grateful for today? So very basic. Yes. But इसके benefits बहुत ज़्यादा हैं. If you continue to do this habit, it makes you so much more of a calmer person who knows what they want and who knows how they feel, and basically that makes you a secure person. क्योंकि जब आपको अपना अच्छी तरह पता हो ना, तो things and people cannot get under your skin easily because you're very sure of yourself. So that's why I made the product. It was manufacturing के time पे I had issues. And where are you manufacturing it? Like in Pakistan, China? Yeah, Lahore. Okay. So पहला vendor, दूसरा vendor, तीसरा vendor. Were they not producing the same quality that you had in mind? Yes. So quality issues आपके लिए. With every new batch of order, the quality was compromised. एक दफ़ा एक बन रहा है, images एक डाली हुई हैं. Now all of a sudden जो order आया है, यार ये क्या है, ये colors तो वो है. कभी उल्टा है, कभी color ठीक नहीं है, कभी पता नहीं क्या, like print सही नहीं है. Like I can't tell you the dumb issues that I faced in manufacturing. And then I continued that, and then it got better and better over time with the printers. But the thing is that it was many years of doing this, and I hired people and I got people to do it. And the reason that I closed it down was because even after so many years, I still had those problems, and those problems still weren't resolved until I would get into it. And because, और मेरा जो vision था ना उसके साथ, it was above and beyond of what I had created right now. The things I wanted to do with it, the scale that I wanted, the products I wanted to create, मेरा एक ड्रीम था, एक विजन था. लेकिन अगर मैं इतने सालों तक आज भी प्रिंटर्स के साथ खप रही हूँ और मैं जब तक वो नहीं करती, वो चीज़ रिजॉल्व नहीं होती. इट वॉज जस्ट द फैक्ट दैट कहते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो आपके लिए आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है कि दिस इज़ नो लॉन्गर सर्विंग मी, दिस इज़ इन फैक्ट doing the opposite. So I'd say financially it was serving me, but what was it taking out of me? So much of my time and effort. And it was taking away my time and effort from things that were coming to me much easily, that I could be spending more time on doing, and इतना नुकसान भी नहीं हो रहा इसमें. अगर मेरा इतना टाइम उसमें लग रहा है, तो या अगर वो प्रॉफिटेबल भी है बिजनेस, then is it really profitable? Because if all of this time and energy is going into it, money aside. Yes, understood, completely understood. Time and energy उसमें जा रहा है. So I realized that's actually what it's doing is, and it took me, I had to think about it very practically and less emotionally, because this was my baby. To realize that, Hamna, this business is actually stopping you from everything else that you could do, because ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा. Years later, I'm still solving the same problems, and it still takes so much of my time and effort. So what is it doing? So it took me some thinking to realize that no, it's actually not serving me. It's something I need to let go, at least right now, because I don't even, like मेरा बच्चा हुआ था, like I said, I didn't have the space to figure out the solution, like नहीं था. तो और मेरा ये कि I just felt like I did not want to create mediocre products. I wanted to do justice to the people and the product, and justice to the brand, and I was not going to just create anything. तो मुझे था ठीक है, मैं maybe later when I have the capacity I'll come back to it, but I am not going to continue it for the sake of continuation and destroy my brand. Because अगर मैं बनाती गई और वो mediocre quality, because I did not have the attention to give it, तो अगर मैंने कहा बस ठीक है कर दो, और literally मैं इसी zone में थी कि अच्छा यार बस कर दो, तो अपना ब्रांड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना. ऑफ कोर्स, जो आपकी रेपुटेशन है, जो आपकी फेस वैल्यू है, जो आपकी एक रेपुटेशन है, जिसकी वजह से आपकी एक फॉलोइंग बनी है, एंड पीपल नो फॉर योर द वैल्यू यू प्रोवाइड, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे आर गेटिंग लाइक अ मेस्ड अप प्रोडक्ट. वो कहेंगे यार हमना तो लगता है उसकी कोर वैल्यूज बदल गई, अब पैसा छापना उसका काम हो गया और वो वाली प्रोडक्ट नहीं दे रही, ये तो मुझे यहाँ से भी मिल जाती फॉर हाफ ऑफ द प्राइस. और आप ये सोचे ना कि मेरा डिफरेंट रोल था. आई वांटेड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन द प्रोडक्ट in its utility, कि उसके अंदर क्या है, लोग क्या भर रहे हैं, उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है, that. But if I have to do
दैट ऑल्सो वो भी नहीं फिगर आउट हो रहा, सर खपाओ और वो अभी तक नहीं हो रहा, तो फिर जाहिर है मैं किसी चीज़ पे तो कॉम्प्रोमाइज़ करूँगी ना. एंड आई डेंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन आइदर, नॉर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, नॉर व्हाट्स इनसाइड द जर्नल. So जो अभी आपका business compromise हुआ, that is because of the stupid suppliers, the stupid manufacturer, I would say, because you are giving your 100%, बल्कि 110%, you are working on it, you are masterminding, you are brainstorming different ideas for that product, but somehow that is not being materialized into the real world because of the suppliers जो कि वो quality नहीं provide कर रहे. And I guess maybe it's that, you know, I would say कि मेरे part पे ये failure हो सकता है that I was unable to get people who could do that level of work that I wanted, but I couldn't find the resources who could you know produce the same quality. मतलब मैं उनको जितना भी समझाऊँ वो उसको उस तरह नहीं कर रहे थे जैसे मैं करती थी, जैसे मैं चाहती थी. So you know, I would say, and like I said, so I can identify the things that I could do better, but I don't have the time for that. So maybe because I've taken my lessons from it, I would like to definitely learn from them and do something about it in the future. How do you find, like, चलें ये तो आपका experience हो गया manufacturers के साथ, it was not good enough, they were not up to the mark. What it seems like कि जो लोग आपको approach करते हैं for sponsors and paid promotions, like how are these people generally, like the PR people who want to do some brand promotion? Because I was very sad to see this when your husband was going through this surgery, or when you had to fulfill some orders कह लें, promotions कह लें, and you were going through this tough time, but brand कह रहे थे नहीं आपने हमें काम देना है, we don't care what you're going through. Like they don't have this feeling कि यार on the other hand side, regardless of how much money you are paying, एक इंसान बैठा हुआ है, right? And he has situations in life, and right now she's in a very tough spot right now that she never imagined that she would be. So generally आपको क्या लगता है in the business world, your experience with the promotional side of things जो आपको PR वाले लोग करते हैं, ये जो आपका failed business तो नहीं कहेंगे, inshallah it will be revamped with the right time, when you have enough right resources and people who could really execute that at the physical level. What do you have found? Like यहाँ पर भी आपकी क्या वही philosophy है कि people are generally great after having experienced like such scenarios in your life, and these are that you have been through. It's not something कि हम just theoretically बात करें. You really have been through these tough times. So how you find the reactions of the society around you who you say give you the work, like जिनके लिए आप काम कर रहे हैं? How are these people normally like? They understand humans? अच्छा, सो आपने एक तो ये बोला, अभी मैं PR और ये इन ब्रांड्स पे आती हूँ, बट आपने बोला कि आपने जब ऐसे लोग भी देख लिए हैं तो डू यू रियली थिंक कि लोग अच्छे हैं? और आपने देखा है, तो नहीं उड़ गया. दिस इज आई थिंक I have been through some major stuff which doesn't even come close to this, and some very horrifying things in my career. In your business career? No, both in business and business maybe, and in my content creation journey as well. Like I've had my fair share of controversies and issues and hate, but so I would say that no, not all people are great, but for some odd reason, I don't know why, but I have ये PR वाली चीज़ को साइड पे रख के, the hates that I have experienced, I have been able to come to terms and understand why people behave in a certain way. I think you can say कि कहते हैं कि आप enough experience करो तो you grow a thick skin type. Yes. And I wouldn't say that I've grown a thick skin, but I've learned to not let it get under my skin. And the reason for that is not कि I've stopped caring या मैं बहुत कोई strong हो गई हूँ. I wouldn't say that. I still say that I'm a very sensitive person. But I'm also able to maybe understand that when people who don't really know you can hate you so much, then it's personal to them, it's not personal to you. So it's them.
something is wrong in them or in their life, or where they just can't seem to get past some sort of your success or your happiness or your something. क्योंकि अगर आपने पर्सनली किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, वो नहीं किया, तो अगर वो बहुत वाइल्ड तरीके से आपके पीछे आ रहे हैं, and they're looking for every big and tiny thing to attack you, then it really doesn't have to do with you. You know, and there's a difference between hate and criticism, and I've learned that, and I've also learned times when I took criticism as hate, but now I know and I have learned. So जो आपने बात की कि लोग वही ज़्यादा लोग अच्छे हैं, कुछ लोग हैं जो इस तरह करते हैं, हमें उनकी वो ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, बात सिर्फ इतनी है, तो हमें उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है. तो and I've learned to understand how to look at people who appreciate me more. And I have also, जो कि पहले भी मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को मैं इम्पैक्ट कर रही थी, and I've also learned one thing कि पहले after some experiences, मैं पहले जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते थे या मेरे जो मैं इम्पैक्ट जनरेट करी थी उसको अप्रिशिएट करते थे, मेरी तारीफ़ करते थे, I took it seriously in the sense that I was like, oh, you know, wow, like मैं तो बहुत impact generate कर रही हूँ और मेरा तो ये है, and I've done so great, and this is not to say that I don't value myself for what I do. This is to say that अल्लाह मियाँ देता है और अल्लाह मियाँ ले भी सकता है. True, 100%. And it's okay. It's important to keep yourself reminded of the fact that just because you're doing great right now, don't take it too seriously, because it can go away in a second. And sure, people love you and you're doing great, but you know, just don't let it get to your head in the sense कि आप अपने आप को आपसे शायद आपको अपने flaws नज़र आना भूल जाएं, या आपको ये understand ना हो कि there are people who maybe will not love you and will not like you. And just be okay with the fact that there are people who don't like me and there are people who like me, and that's completely fine. And I think when you don't take your praise too seriously is when you don't take your hate too seriously, because the more seriously you take your praise, the more seriously the hate will affect you. But जब आप इतना उसको सर पे ही नहीं चढ़ा रहे, तो आपको हेट से भी उतना फर्क. बट देन हाउ यू टैकल इट, हाउ यू इग्नोर द जिसको स्टार्ट में आप हेट कहा करती थी क्रिटिसिज्म को, बट हेट नजर आता है, क्रिटिसिज्म वही मैं कह रही हूँ, डिफरेंस है. पहले भी मुझे डिफरेंस पता था, बट देयर वर टाइम्स दैट आई यूज्ड टू गेट अनर्व्ड बाय. हाउ डू यू डील विद हेट when you have gone through so much, and where you are now grown enough and in this industry for a very long time? अगर हम 2014 से भी बात करें तो 8 साल एक जिंदगी होती है, right? So what's your mechanism to cope with this negativity and that hatred जो आपको करते भी हैं, जो आपकी पॉडकास्ट के सेक्शन में शायद नीचे कमेंट्स में आ जाते हैं, या शायद आप कोई चीज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हो, आपको कमेंट्स में आ जाएं, आप स्टोरी पोस्ट करती हो, वहाँ पे आ जाए. So how does your mind work right now to cope up with such population? अच्छा, मैं एक तो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो बात अगला बंदा कर रहा है, दिस इज़ प्योरली आउट ऑफ हेट, दिस इज़ प्योरली आउट ऑफ something that they're probably happening in their lives, and it's not personal. And I have learned to segment and identify people as well through their profiles, or the kind of tweets they do all the time, or the kind of things they say generally as well. कि अच्छा, this is purely somebody who, this is how they are. They just go around hating on the next person and the next person. उनको तो बिल्कुल ही seriously नहीं लेना. But so segment कर लिया कि इसकी बात तो वैसे ही it holds no credibility for me, because this is what they do. Like there are some people that are just sitting there and just hating on the next person and the next person. But another thing is, lost my train of thought. कि a lot of the times, and this has to do with the fact that what I've able to understand is that आपको जो एक्चुअल हेट बॉदर करता है ना, वो होता है जब आप मिसअंडरस्टूड होते हो, कि आपने कोई चीज़ अपनी तरफ से डाली है जिसकी एक सर्टन इंटेंशन है, जिसकी एक सर्टन पर्पस है, और जान के लोगों ने उसको ट्विस्ट किया है या डाला है या उसके बारे में कोई बात की है या उस पर हेट किया है. वो चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर करती है आपको, बिकॉज यू आर लाइक, नो, यू आर मिसकंस्ट्रूइंग what I'm doing, you are misleading the people and the public. And I've learned to realize that I don't
care if people misunderstand me. So because अभी recently भी कुछ हुआ था, one of my podcasts के ऊपर कोई tweet आई थी कि ये क्या बोल रही है, ये देखो. अच्छा, अब उन्होंने जो अपने caption में लिखा हुआ था ना, that was कि हमना रज़ा इन दिस. अब उनको पता है कि किसी ने ना खोल के पूरी पॉडकास्ट नहीं देखनी, लेकिन उन्होंने ट्वीट में ऊपर लिखा हुआ है कि हमना रज़ा ने जो है इस पॉडकास्ट में ये बात की और ये बात की. एंड इट इज़ अ कंप्लीट ट्विस्टिंग ऑफ माई एक्चुअल वर्ड्स, जो कि मैंने बहुत थॉरली एक थॉट एक्सप्लेन किया है, बट उसको ऊपर ऊपर से उठा के वो कर दिया, एक उसमें डाल दिया. इट वॉज अपसेटिंग, बट it was very obvious that this has been twisted. There is a purpose. This person is trying to get under my skin. This person is trying to defame me. And I cannot spend my time and energy on this. और एक और point पे मुझे realize हुआ था कि जो actually में जो लोग कुछ काम का कर रहे होते हैं या successful होते हैं या कुछ काम का कर रहे हैं ना, उनके पास time नहीं होता to sit and bash people. और ये realization मुझे कैसे हुई थी कि देयर इज़ अ ग्रुप जिसपे अक्सर हर कुछ अरसे बाद ना दे राइट समथिंग अबाउट मी, समबडी कम्स एंड राइट समथिंग अबाउट मी एंड देन सब लोग उसमें उस पर लोग आगे फिर कमेंट करते हैं, जिसमें थैंकफुली अल्लाह ने मुझे ऐसे सपोर्टर्स दिए हैं कि बहुत सारे लोग आके मेरे सपोर्ट में बोलते हैं, अल्लाह का शुक्र है. एंड आई लव दोज पीपल फॉर दैट. बट आप ये सोचें कि एक दफ़ा उस ग्रुप में मेरे बारे में कुछ आया और मुझे लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि यार हम ना उस ग्रुप में ना तुम्हारे बारे में लोग कोई ये बात करें. आई स्वेयर मेरे पास उस पूरे दिन में टाइम ही नहीं था कि मैं चेक करूं कि मेरे बारे में लोग क्या बात करें. और आप सोचें कि लोगों के पास इतना टाइम था कि वो बैठ के मेरे बारे में बातें कर रहे हैं. somebody who doesn't have the time to read what people are saying about her. So they're spending their time talking about somebody else. I don't even have the time to read what people are saying about me because I have so much to do. Yes. I have things to do. I don't have time for this. And that was the moment where all day I didn't have the time to open Insta. I realized, listen, you really don't have time for this. I don't have time for this. So they can do it and maybe they'll get something out of it, but I know that this is not good for me and I have better things to do than read what people are saying about me. And I swear, like मुझे परसों ही किसी ने कहा कि recently एक ग्रुप में तुम्हारे बारे में ये आ रहा था कि तुम जो हो पाकिस्तान में फ्लड्स आ रहे हैं और हमना जो है ना स्कर्दू ट्रिप पे गई हुई है. तो फिर पीछे फिर उसमें लेकिन लोगों ने आके बहुत बोला कि पागल तो नहीं हो, तुमने क्या अपनी ज़िंदगी गुजारना छोड़ दिया है, एंड अभी हमना एंड मुज़म्मिल हैव बीन थ्रू समथिंग एंड they need this for it, so how can you like say all this and have you like stopped doing everything in your life just because of the floods? And it's not like she's not being sensitive about it. For the longest time I didn't post anything, I was just posting about the floods, so it's not like आप अपनी ज़िंदगी रोक सकते हो, right? वैसे भी मैंने वो 1.5 महीने पहले प्लान की थी चीज़, फिर floods आ गए, like whatever the justifications are, right? And I didn't even know. I found out about this like I don't know 2-3 weeks later कि अच्छा ये बात भी हुई थी. So अब I'm at this point कि for some reason But as a content creators ना, मतलब when you have such a huge following, because I have friends who have, मेरी तो कोई following नहीं है, but I have seen my friends who have a huge following, कोई story डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, and like 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद now they are checking कितने comments आ रहे हैं and they are reading every video. What's because your partner is also a content creator, so if you can shed some light ke like how much time like solid content creator who really want to give their best at the content side of things, how much they give time या value to the comments that are getting through, like आपने post कर दी बड़ी बेहतरीन, आपने एक मेहनत की और उसके बाद आपने वो post कर दी, now you are checking के कितने views आए, क्या criticism आ रहा है, क्या comments में क्या आ रहा है, let's read about it. So how much you time personally spend like that on such things? अच्छा, पहले बहुत ज़्यादा करती थी and I think करना चाहिए because people are commenting, तो I think it's good if you respond to the comments, if you listen to what people are saying, it helps you grow your content as well, and it helps you build a relationship with your audience as well. YouTube पे शायद इतना नहीं, लेकिन Insta पे तो it really matters because Insta पे creators का बहुत direct कनेक्शन होता है विद द फॉलोअर्स. यूट्यूब पे इतना ज़्यादा नहीं होता. सो आई थिंक यू टेक्निकली शुड रिप्लाई टू द कमेंट्स एंड चेक योर DMs, एंड बट द थिंग इज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट टेक्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ योर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू देम एंड टू डू दैट. सो एंड आई थिंक यू शुड डू दैट, स्पेशली इफ इट्स योर फुल टाइम जॉब जैसे मेरा है.
But I think after the baby and wo again, I would say I don't have the time for it. So I do it sometimes. When I have the time, I do it. When I don't have the time, I don't do it. But I think it's something that one should do. However, to learn that balance is to not get obsessive about the number. The number of comments that you're getting and the number of views that you're getting. It's important to really stick to your goal and be consistent in what you're doing. Obviously, it's good to improve your content as well to learn, and it's important to do that data collection for yourself. But it becomes unhealthy when it affects you. Yes. Right? And I feel like the moment it starts affecting me, I stop looking at it. Affecting you in which sense? Like when you read too many negative comments और आप self doubt कर रहे हो क्या? Thankfully इतने आते नहीं हैं अब. अच्छा. लेकिन अच्छे ही आते हैं ज़्यादातर. बहुत कम negative comments आते हैं. But I think, but like I said, मुझे negative comments से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. But I think it's more like if it starts affecting you that your piece of content didn't reach enough people, या इतने comments नहीं आए, इतने views नहीं आए, अगर वो चीज़ आपको affect करना शुरू कर दे, तो I think आपको थोड़ी देर के लिए देखना छोड़ देना चाहिए. Maybe you can evaluate कि अच्छा ऐसा क्यों है. But मेरा ये होता है कि अगर and also understand, right, कि आप it's important to understand what you're trying to achieve with every piece of content. So I'd say that there are some pieces of content that I know it's like a business. ठीक है, आप जब मार्केटिंग करते हो ना, तो आप कभी कभार आप फॉर एग्जांपल अपने प्रोडक्ट का एक फ़ोटो शूट कराते हो. एक आपका फ़ोटो शूट ऐसा होता है, या चलिए आप एक इन्फ्लुएंसर के साथ काम करते हो, ठीक है, मार्केटिंग की बात कर लें. एक आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिससे आप सिर्फ प्योर ब्रांड बिल्डिंग करते हो, वेयर यू ट्राइंग टू गेट अ स्पेसिफिक मैसेज आउट देयर दैट दिस इज़ व्हाट द ब्रांड इज़ अबाउट, एंड यू आर नॉट कंसर्न विद द रिजल्ट्स ऑफ द सेल्स. सो यू आर जस्ट सेइंग कि मैं अभी ब्रांड बिल्डिंग कर रही हूँ, या लोगों की क्या उसे कहते हैं, what word do you use? I think you would know because you've been in digital marketing. Brand awareness? Brand awareness, awareness, I think. You know what you're about, right? And it doesn't really matter if you're generating sales from it, but you're getting the word out there. Your unique selling proposition, that this is what you stand for and this is what is unique about you? You can say that. Okay. I think that's a bit different, but more like what your brand is about. You're trying to do certain messaging. So for example, अगर कोक जो है वो एक ad निकालती है which is about उनका एक ना हैप्पीनेस कैंपेन आई थी, ठीक है. अब उसमें ये है कि they're just trying to tell people that coke and happiness are one. The idea is not कि लोग कोक ज़्यादा खरीदें, वो लोगों के जहन में एक चीज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं. That's what I'm talking about. I don't know the official term for it, but they're trying to create a certain image associated with their brand, ठीक है. But then there's certain type of marketing that you do that is purely to generate sales, ठीक है. तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप जो है कोक पीते हुए ज़रा आवाज़ आएगी, ज़रा ठंडी वो दिखाओगे, क्रिंग क्रिंग दिखाओगे, because you want people कि उनका भी दिल चाहे वो कोक लें और वो कोक खरीदें, right? So that's two different kinds of marketing. So I do that with my वो as well. There are certain things that I know that will not generate views. जिस तरह हमने स्टार्ट में एक बात की थी पहले कि इंस्टा पे कुछ कंटेंट है जो नहीं चलता, जो नहीं चलेगा बिकॉज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चलता है. बट आई डू वॉन्ट पीपल टू नो हु आई एम, what my brand is and what I stand for. So I will create a certain kind of content which I know will not get people to comment, but it will at some point go through like their eyes, like they will see it, or when a new person comes to my profile and they see the content I've created, I want them to see it because I want them to know, hey, this is the brand and this is a business. So I will still create that piece of content. So फिर मुझे I have to know, okay, this is going to get views, but I will not, फिर I will have to ensure कि अच्छा, I will have to tell myself कि listen, इसके views नहीं आएंगे and that's fine, this का purpose ही और है. So a lot of the times जब मैं हैप्पी चर्प का जो इंस्टा है उस पर हम लोग clips डाल रहे होते हैं हमारे podcast, तो the girls who work with me on that, तो they usually say कि यार ये वाली डालते हैं, जिसना क्योंकि है वो मैरिज ज़्यादा चलती है, रिलेशनशिप ज़्यादा चलती है, तो वो कहते हैं ये वाली डालते हैं, ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लोग आएंगे. एंड आई एम जस्ट लाइक लिसन, बट पीपल नीड टू नो दैट दिस इज़ नॉट ऑल वेयर अबाउट. People, I know that when I'm going to talk about personal branding or when I'm going to talk about women in leadership roles or women in working roles, less views, but people need to know that yes, we talk about this. This also exists, right? This is part of the brand, so you put it out there. It's fine. It's not, and it doesn't get the views and it doesn't get the comments, but it's important for people
people to know that this is what we're about. So it means like Instagram is more of a brand awareness platform rather than generating sales platform. No, right? I don't think that. Do you think it's a good idea if you have? I think it should be used for both because it can do both. I think the way that Instagram generates sales is insane. YouTube can never generate sales the way Instagram does. But generate sales through Instagram once you have a good reputation out there. Like in your case, you have 400,000 plus followers and a mehnat of 8 saal piche, right? And if somebody just who has started like a couple of months ago, or wo apne usko sponsor kar deta hai profile ko, and now he's getting this traction through paid advertisement, और लोग आ रहे हैं और लोगों का अभी उसके साथ connection नहीं बना, और then you start pushing towards sales के यार मेरे ये brand है. Let's say for example मैं वही planner की बात करूँ जो आप planner बनाती हो. I'm selling that. Nobody would buy that. I feel like there needs to be this connection with this influencer or that content creator, because you are buying from Humna because you have known Humna for a long time by following her content, and you know that she's gonna get you the best product out there. Otherwise, there is Daraz, there are like in go to market, you can find similar products as well. The people, it is the reason you are saying generating sales works. I feel like there needs to be this extra effort that organically that you have done over a period of long time, and then I feel like yes, you can generate. It's just like any startup, right? Imagine you have a platform of Happy Chirp, you have work day in and day out bringing amazing female impact creators, entrepreneurs, content creators, social activists and whatnot, right? Imagine you are putting out that work for like 3-4 years, and you now have a following of 100,000 subscribers who loves you for your work and who knows that you are doing something that nobody else is doing. Imagine if you launch something related to that Happy Chirp brand, right? I think you don't have to sell that. People will just like buy in. You just like say that I'm launching this product, and I feel like it can make your life easy. If you want to try it out, just try it out. Yeah, because you've built the brand. But imagine if you are just Humna, उसने 2 episodes किए और now she's saying in the 3rd podcast table पे जो है वो एक चीज़ पड़ी हुई है, और इसको ज़रूर try कीजिएगा, ये बड़ी skin को glow करवाएगी और आपकी skin ऐसी हो जाएगी, आप गोरे चिट्टे हो जाएंगे. Regardless, people are like saying कि हाँ यार गोरा चिट्टा होना, it's a phenomenon, but why? Like they don't even know you. That उसके Fair and Lovely है कि कौन से हैं, they are in the business for more than your age, right? So I feel like yes, sales generation, but a brand reputation, a personal brand should be there first. तब आप जाकर ये बात कर सकते हो, because you are coming from a perspective 8 साल की मेहनत भाई, 8 साल मेरे ख्याल में it's a very long time to give to almost a decade. Yes. So आपको आजकल कैसा लगता है when you have 400,000 followers and you have this amazing podcast as well? Deep down inside यार, I'm now a celebrity. What's like एक आम बंदा किस तरह relate कर पाता है? Because I know your content is very relatable, but how is like your life deep down when you are just Humna, and just forget about the Instagram and just forget about the podcast? Like how is Humna in like real life? Like is she really like the way she is on the social media? Yeah, no, that is a different picture. आप बताएं. Yeah, to be frankly honest, by following your content, I feel the genuineness in your content and the authenticity, both your and Muzammil's. Because one thing that I really like about your content is that mostly that whatever I see in your content, it's what's happening in your life. Mostly that is what I feel like, playing with the kid, या कहीं पे चले गए, या talk about something, या किसी even brand के साथ कोई affiliation भी आ गई. So that is what I feel like. This is people normally are. They live this way. If you are an influencer, this is a part of your life, and you are posting about your life, the way life is going, even tough times, right? Like
you mentioned the story of this karma when you were working for this hospital, KRL, I guess, and you said that you helped for a lady who was like traumatized, and you raised funds, and when Muzammil was diagnosed, and all of a sudden that you are going through this again, and there was this connection that touched down to कि आपने life में वहाँ पर कुछ किया, and now it's coming back, right? So looking at such content, I don't see any flashy or just banawati. I feel like it's very authentic. The thing with me is that I'd say that is the reason for a lot of the lack of being able to, जो मैंने आपको वो बोला ना कि बेबी के बाद एक साल मेरा बहुत डाउन था और मेरा कंटेंट भी बहुत डाउन था, because I cannot show up in a way that I'm not actually feeling. So if I'm not feeling it, then I can't do it. I can only do it if I'm feeling it, and that's just like how I am as a person. And जहाँ आपने authenticity की बात की, it's a very big part of my personality, and I try my best कि वो चीज़ मैं अपने content में भी रखूँ, कि I try to be as authentic and as genuine as possible. एंड मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, दिस इज़ नॉट समथिंग जो मैं इस तरह कोई भाषण दे रही हूँ कि यू नो ऑथेंटिसिटी तो मेरी बहुत है और वो, बट लाइक आई सेड, इट्स समथिंग दैट कम्स वेरी नेचुरली टू मी, एंड आई फील अनहैप्पी इफ आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट दैट आई डू नॉट एक्चुअली फील. वो मुझसे बनता, एक तो वो मुझसे बनता ही नहीं है, दूसरा ये कि इफ़ आई डू क्रिएट इट देन इट डजंट गिव मी the satisfaction in my work, and I'd say that the reason for that is because of why I started this in the first place. क्योंकि मुझे पता ही, क्योंकि अगर देखें, अगर ये चीज़ मैंने start की होती as a career, as a source of income, so my attitude towards it would be very different, or if it was for fame, but because those factors were not there पहले, it's just the way that the way that I started creating content was for a very authentic purpose, and that sort of continued, and that is what gave me the drive to continue to do it. So as soon as I feel like, you know, I'm being inauthentic, या मुझे बहुत extra effort डालनी पड़ी है into creating something that I don't really feel, but I'm just creating because I have to create, sure, I can create it, and maybe some people will not be able to look past the fact that it's not authentic, but I just don't feel good about it. मुझे ये होगा कि ये मज़ा नहीं आया इसको बना के, ना उसे करके. बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आज ही मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टा पे, और उस पर एक कॉमेंट आया कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं याद, बट समथिंग अराउंड द फैक्ट कि आई फाइनली सी दैट यू आर इन अ गुड प्लेस नाउ. माई फॉलोअर्स know me really well, and they know, because I cannot be something that I am not, right? So they also see it. If I'm not happy, I cannot post a happy post us tarah se. If I'm happy, I can post it. So a lot of the times I'm just like, you know, मेरी जो struggle रही है वो recently हुई थी, you know, why can't I be like who I used to be in this place before? Because the fact is, because I am not that person, so I can't be. Because my content, alhamdulillah, I'm so grateful for that it comes genuinely from me. So if I'm not that person, it's not going to come. I'm not who I was before, so it's not showing in my content. So what's your belief like? आपको क्या लगता है? Because again, 8 years, I consider you an expert in this domain when it comes to like create your own brand and be yourself. What do you feel like in this industry mostly, like how much authenticity is lacking on the Insta world? Like you would say कि क्या यार, mostly again दोबारा मैं connect करता हूँ, आपको सारे लोग बड़े अच्छे नज़र आते हैं, mostly people are great. Is this the really case on the Instagram platform as well, जो authenticity के perspective से है? या मैं तो जब देखता हूँ ना, frankly honest with you, मैंने तो मोबाइल पर एक आईफोन में वो आती है ना, वो आप लिमिट लगा देते हो सोशल मीडिया पे. मेरा सोशल मीडिया का टाइम जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, इट्स मैक्सिमम 1 hour across these 2 platforms, right? The reason for it is that the content, regardless I follow the people, I am constantly bombarded with this shosha, with this glamorous
world out there which I am unable to connect with, resonate with, right? So that phenomena of authenticity, is really that the case with you and the accounts that you follow and mostly you have seen through your journey? Okay, so I would say that I agree with you. The thing is that Instagram was one of the most authentic platforms once upon a time. Hua ye hai ki because of the TikTok style of content, what has happened is that content originality and authenticity is lost because people are just recreating the same kind of stuff, which has obviously made it very easy for a lot of people. तो अब Instagram पे मेरी एक अपनी podcast पे किसी से बात हुई थी जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि imitation is rewarded. So how much can you imitate this sound, और आप इस पे अपना क्या twist डाल सकते हो, और so yes, people are there is lack of authenticity, there is a lack of originality. और जो आपने USP की बात की थी, the whole point of Instagram and being an influencer is आपकी credibility तब होती है जब आपका unique selling point होता है. आपका unique selling point क्या है? You are this person who people follow you for you, and the moment that you are not you, जो authenticity की बात है, right? If you are just like anybody else, then why would people listen to you? Why would they, आपने जो बात की थी, why would they listen to what you're saying? Why would they follow what you're saying? Why would it impact them? So the fact is that I believe that as an influencer, it is extremely important to be authentic, because that is the whole point of being an influencer, to influence out of the authenticity of your life and how you live it. प्रॉब्लम तब आई जब आपने टिकटॉक डांसेस, टिकटॉक के ऑडियोज़ और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा व्यूज़ आना शुरू हो गए, लोग अप्रिशिएट करना शुरू हो गए. एवरीबडी जम्प्ड ऑन दोज bandwagons. People lost their authenticities, the originalities. Everybody's doing the same thing, so they're repeating, and everybody's creating their content on the same audio, on the same stuff, giving it a small spin, and people are enjoying that and people are responding to that. But I know that there is a difference between somebody who is just creating and somebody who is actually influencing from the authenticity of their real life. एक प्रॉब्लम जो आया इंस्टाग्राम पे, वो मुझे इस तरह लगता है कि देखें, इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स में फ़र्क होता है. कंटेंट क्रिएटर्स क्रिएट स्पेसिफिकली, सो दे विल से कि अच्छा हम एक पीस ऑफ कंटेंट बनाने लगे हैं. इन्फ्लुएंसर होने का ये मतलब नहीं है दैट यू हैव टू क्रिएट दिस पीस ऑफ कंटेंट. इन्फ्लुएंसर होने का मतलब प्योरली है इन्फ्लुएंसर होना. और इन्फ्लुएंसर आप तब होते हो जब आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो from who you are. So you are giving people goals based on your personality and your life and what you do, rather than कि आपको एक ऑडियो मिल गई टिकटॉक पे जो कि एक वॉइस ओवर है ऑफ somebody saying some inspirational stuff, और उस पर आपने अपने बी रोल्स डाल दिए और आपने एक कंटेंट पीस डाल दिया. Right? Anybody can do that. So many people can do that. Yes. It's about, sure आप वो कर ले, मैं ये नहीं कह रही, but how authentically you can put that content piece out there where people can see that yes, this is coming from you, from your life where you are. Or it's just a bunch of B-rolls, camera work on this audio. So, and I think कि जो stories का concept है, a lot of influencers are there जो कि stories पे बहुत ज़्यादा connect करते हैं अपने audience के साथ, and आप शायद वो अपनी जो content create कर रहे हैं, जो उनकी feed पे जा रहा है, that's not the most authentic. Sure, it can be glamorous, but if they're coming on their stories very raw and sharing from their life and sharing their vulnerable moments and talking about their life and inspiring people, and I think that's authenticity. And that needs to be there. People need to know why they should listen to you, or why are they even following you, what sort of impact you generate in their life. इतनी मेहनत करके content बनाना by an influencer, like is it like a lucrative career in the first place कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, मतलब कि इसके rewards, because as far as like जब आप monetization की बात करते हैं, जैसे YouTube पर तो चले on है, Facebook पर so हैं, right तरीके हैं, is like Instagram आप इतनी मेहनत कर रहे हो, is it like monetization wise in Pakistan it's enabled, आपको तो कुछ पैसे तो नहीं आ रहे होते हैं, and
अगर कोई करना भी चाह रहा है, किसी का ये पैशन भी है, दैट सही है, मैं ऑथेंटिसिटी भी डिलीवर कर दूंगा, आई विल बी कंसिस्टेंट, सीम्स लाइक आई लाइक डूइंग इट, लाइक मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे कोई मतलब कि फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ इस तरह मैं स्क्रीन पर भी हूँ, इसी तरह मैं सोशल मीडिया पर भी हूँ. Many people are comfortable with that lifestyle, right? But in a long run, is it like a sustainable and a lucrative career कि कोई इसको मतलब fully इसको adopt करना चाहे? What would be your take on that? I think I would say कि देखिए one of the cons would be कि it's really dependent on you and your face. Yes. ठीक है, एंड दैट इज़ नॉट अ रिलायबल थिंग इन द सेंस कि जिस तरह आप मुजम्मिल के केस में देख लें, ही गॉट अ सर्जरी ऑफ हिज टंग, एनीथिंग कैन हैपन, यू नो, लाइक सडनली इफ फॉर सम रीज़न यू कांट परफॉर्म, योर सोर्स ऑफ इनकम इज गॉन. सो आई वुड नॉट से दैट दैट्स entirely reliable. I would say that for somebody who is my age, for an average person in Pakistan, my age, the amount of money you make from your paid partnerships, it's a lot. I'm putting out there very frankly for Pakistan, because generally anybody who is having 400,000 followers internationally, they make a lot more money. But Pakistan ke level se, I'd say that we're making a lot of money. So how we work in the sense ke acha जो एक एवरेज यू नो हस्बैंड वाइफ का जो इनकम है, वो जो मंथली बेसिस पे कमा रहे हैं, वो मैं एक महीने में लिटरली 7-8 महीनों के पैसे मेरे पास होते हैं. wow. तो अगर मेरे पास 7-8 महीने के या 6-7 महीनों के पैसे जो हैं वो नहीं बनते, बट आई विल मोस्ट प्रोबेबली हैव दैट अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज सी digital marketing, influencer marketing, you know a lot about digital marketing, I think so, right? Yes. So it's creating a lot of money right now, and brands are spending lots of money on digital marketing and influencer campaigns. So it does generate a lot of money. Yes, I'd say that you get a lot of money in that way, but I would say that when you have reached a certain level in this space, you have to figure out other sources of income, and that I would say that maybe because आपकी एक लोगों के साथ connection है and people find you reliable, I think the best thing to do is start your businesses. Own business, yes. Yeah, start your own businesses ताकि उनसे भी वो हो जाए, and that the sole responsibility is not on you to perform. So it's important, it's imperative, I think, कि you have to have another source of income, which is, and especially in our country जिसमें suddenly कुछ भी ban हो सकता है. So like suddenly YouTube getting banned or Insta getting banned, suddenly I've lost my source of income. So it's so important to at least work towards certain kinds of investments or businesses that can generate another source of income. When you say you can generate a lot of money through your Instagram career, does it mean that you can buy a home in Islamabad with that much money? No. Not like that. Okay, let me put it this way. Like, you can, matlab, if you don't do anything else with that money and you save all that money, तो matlab, and it depends, right? आपको कितना काम आ रहा है. The fact is कि project based है ना, कभी आता है कभी नहीं आता. But how you know that you should be charging X amount of money for this particular product brand when you have X amount of followers? Like is it like a Excel sheet that you have, or you have designed something where you have written कि हमना मेरे 4 लाख followers हैं, और जब मैं कोई post डालती हूँ तो 1 लाख likes आते हैं, इतने views आते हैं, तो I should be charging that much? Like, how do you know how much you charge from X brand या Y brand? How does it work? Like, let's say for example somebody approached me, right? They wanted to say कि सर मैं कैप पहनता हूँ, सही है, they see me wearing the cap, they send के सर हम चाहते हैं कि आप हमारी कैप पहने, लेकिन हमें आप ये बताएं सर कितना चार्ज करेंगे आप, right? I have like only 2,000 followers, right? And I barely use Instagram. So and I get this query, and मेरा Instagram भी टीम के पास होता है, right? Most of the time. So सर ये मैसेज आया है, इसका क्या करें? And
I don't know what to do with it. Like somebody who is taking time out of his schedule या if doing full time सही और इतनी मेहनत कर रहा है और इतना अच्छा content बना रहा है और research भी कर रहा है और let's say अगर बाज़ लोग बड़े enthusiastic होते हैं and in your case as well you have a full team, right? It's not only you जिसने कैमरा पकड़ा और बस आ गया और वीडियो डाल दी. Yes, story are raw, but if you were to put reels and post, it has to be planned and scripted in a way that should be presented in the right way, right? तो how would you know? Like अगर आपके 4 लाख हैं, मुज़म्मिल के 2 लाख हैं, तीसरे बंदे के 1 लाख हैं, चौथे बंदे के 5 लाख हैं, so how does you guys know how much to charge? अच्छा, सो पहले तो देयर इज़ अ बेसिक फार्मूला, यू गूगल इट, यू कैन फाइंड इट, जो जो आपकी एंगेजमेंट और आपकी रीच को लेके इट्स देयर ऑनलाइन कि हाउ डू यू. किसी पाकिस्तानी ने बनाया, किसी गोरे ने बनाया? गोरे ने बनाया, वही हम फॉलो करते हैं. इट्स देयर, सो यू पुट दोज नंबर्स इन देयर, यू कैन टेल हाउ मच यू नीड टू चार्ज फॉर अ पोस्ट. ठीक है, दैट्स देयर. बट पर्सनली आई बिलीव, जैसे आप कह रहे हैं आपके 2000 फॉलोअर्स हैं, आपको मैसेज आता है, मैं किसी भी न्यू क्रिएटर और इंस्टा को कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी, एंड दिस इज़ गोइंग टू कनेक्ट विद आवर प्रीवियस कॉन्वर्सेशन, कि वो कभी भी बहुत अर्ली फेज में sponsorship ले. And that is why, and this is the reason we don't take any kind of sponsorship. First, build your brand enough, and then work with वो. And the reason for that is कि क्योंकि जब brands आते हैं ना, so brands आते हैं, कोई small business भी आता है, जो भी आता है, they are going to come with their sets of rules for you, कि आप इस तरह बनाएं, या हम ये चाहते हैं, या this is what we want an outcome out of this. The thing is कि when you are not an established brand yourself, then you will just do anything you are asked to do. And you will lose your brand in that way. So वो अपना brand बनाना पहले बहुत ज़रूरी है, because that gives you a say. Because you're like, this is, you can see my content, this is how I do, this is my work. So, you know, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती, ऐसे होगा. Because आपके लिए at this point the most important thing is your brand identity, which has to be very intact, because you're still building. और फिर जब आप, and when you've built it enough, obviously the brands come around as well, कि they're like, हाँ ठीक है, that is the brand identity, and they know that you can sell the product much better because you have built a connection. आप उनके स्टाइल से करने लग जाओगे तो वो बिकेगी ही नहीं चीज़, because वो लोगों को समझ ही नहीं आएगी, because this is not how you do. 100%, yes. वो fake और लगेगा. Because अगर आपका एक स्टाइल डेवलप हुआ है और लोगों को आपके स्टाइल के साथ वो अडेप्ट हो जाते हैं. हाँ, and when something is coming to commercialize और आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, तो मेरे ख्याल में आजकल का कंज्यूमर इट्स एजुकेटेड इनफ who can judge कि यार हमना is not like that, there is something fishy at the push bottom. away भी हो जाते हैं लोग, off से भी हो जाते हैं. You don't want to be like in their face, you know, selling them stuff all the time. आपने वो भी करना है. So I think बस ये है कि you really have to pick and choose. If it's something that is really authentic to you, really part of your personality, go for it, do it. And I'd say कि when somebody start off with like barter, PR, like basic चीज़ें, छोटी चीज़ें, and things that you authentically love and authentically like, and you can talk about. And then over time, you really know your style, and you know your brand, and the brand knows your brand, and then you can work together in a better way. Otherwise, you will destroy your brand from the start. Regardless of how minute following that we have on our YouTube, recently my team member said कि किसी ने टीम को अप्रोच किया कि we are willing to pay 5 lakh rupees to come on the podcast, and I said what, 5 lakh rupees just to come on the podcast and just talk this shit, like why? तो फिर उन्होंने बताया कि सर ये प्रोफाइल है सर, आप देखें. जब मैंने देखा तो I see like, मैंने कहा ये क्यों चाह रहा है. I wouldn't charge him anything, but what is the purpose, why he is approaching you guys to be on the podcast? सर उसको मशहूर होना है. I said what, मशहूर होना है? मैंने टीम को कहा no, not do it, because in order for me to make sense out of a conversation, because right now we are 2 hours into the podcast. Really? Yes, we are 2 hours into the podcast, and in order to drive a conversation like that, I think if I have taken money from Humna na, I couldn't drive that conversation with you. I couldn't connect with you at this deeper level, right? It's completely
बनावटी then Yeah. it's then obviously आप मुझे अगर 5 लाख दे रहे हो then आप ये भी कहोगे कंट्रोल भी लूंगी ना, यही तो बात है. फिर मैं कहूंगी कि नहीं मैंने ये बातें करनी है और आपको वही करनी पड़ेगी. And what happened the other day? What happened? यार नाम लेना चाहिए. Let's don't name the name. There is this famous cryptocurrency marketplace. Their country manager in the Pakistan approached me and said they emailed me, we love your show or the value you are providing and we want to come over to your podcast. And उन्होंने एक दूसरा content creator who has amazing followings, like I will not name that content creator, हमने उनको 12 लाख रुपए दिए हैं and हम आपके show में भी आना चाहते हैं. Okay. I know the brand of that cryptocurrency, the marketplace. It's many countries. Like it's the नहीं बताऊंगा कि छोटा है बड़ा है, लोग समझ जाएंगे. I call, उसने WhatsApp नंबर शेयर किया, उसने कोऑर्डिनेशन की, फिर कॉल हुई. उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि okay, if you want to have a conversation, let the conversation be as raw as possible कि the value that the people is gonna get out of it जब आप दोनों साइड पिक्चर्स के उन्हें दिखाओगे, not ये कि crypto currency is the best way to make money या ज़बरदस्त diversification strategy. मैंने उनको कहा यार is it an investment, right? You are saying to people through your platform कि आओ क्रिप्टोज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बाय करो. नहीं सर ये इन्वेस्टमेंट नहीं है. I said cryptocurrency is just like any Bitcoin, any Ethereum or any crypto. In this day and age, people would love to buy to get a return on investment, right? Why otherwise would people love to carry their money in BTC or Ethereum? नहीं sir, we are not allowed to talk about that. Okay, so then what you are trying to imply is I should only talk about कि देखो हमारा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बायर सेलर्स हैं और यहाँ पर जो है एक्सचेंज है और लोग ले रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंसी और हमने मेंटेन किया हुआ है. बट आप मुझे ये नहीं कह रहे हो कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक टाइप ऑफ एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो. सर इन्वेस्टमेंट का तो आपने लफ्ज़ भी नहीं लेना ना. मैंने कहा यार आप 2-3 लोग आओगे पॉडकास्ट पे और मेरी क्यूरियोसिटी होगी आपसे, मैं जानना चाहूँगा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड यू आर रिस्ट्रिक्टिंग मी. तो आई सेट देम कंप्लीट. मैंने कहा ओके आई एम अ वेरी स्मॉल प्लेयर इन दिस गेम बट एंड यू आर द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री, बट I still am not able to invite you on my show. When you guys are ready to talk both sides of the pictures for my audience, then you are welcome anytime, regardless of any kind. You are invited free of course, but when you are ready, right? But कितने लोग ही ये कर सकते हैं यार, मुझे तो समझ में नहीं आती. when you are putting in so much work और जबकि मोनेटाइजेशन भी नहीं है और जब ने आपको बाकी करियर को भी छोड़ दिया है, when you get such an offer, when you don't have like any income stream, like everybody would love to like. But the thing is, again, how much you are generating through your podcast? Nothing, in my personal humble opinion, right? Same goes for the Muzammils, like the production value that is there and the type of work that is involved and the time that is involved and the team that is involved, right? And the conversation that you are driving, like not millions of people are watching that. There are only tens of thousands of people, regardless of you guys being the industry in the podcasting industry for 2 years, right? और कितना ही लोग जो अपनी जेब से देते फिरेंगे, right? So people are like get like this attraction and this glamour के कोई 2 लाख पे कर रहा है. And my team said, नहीं भाई ले ले, please कर ले, क्यों नहीं कर रहे हैं? And I said, यार, I'm sorry. No, see that's smart because that's what I'm saying कि ठीक है, किसी भी चीज़ में ना, ये तो लाइफ में मैंने सीख लिया है. आप कुछ चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म पे आपको बहुत बेनिफिट देती हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्टकट्स एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स आर बैड इन द लॉन्ग टर्म. सो व्हाट इज़ योर प्ले? ठीक है, आप ले लो अभी 12 लाख रुपए जितने भी, बट इट्स गोइंग टू एंड यू नो लाइक ब्रांड बाय ब्रांड इट्स गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर ब्रांड बिकॉज अगेन वही बात है ना, आपने जो ऑथेंटिक बात करनी है आपने कंट्रोल दे दिया बिकॉज यू आर गेटिंग दैट मनी. आपने कंट्रोल दे दिया, वो कहवाएंगे जो आपने कहना है, आपका तो ब्रांड लूज हो गया. आपने जो ऑथेंटिसिटी निकालनी थी, जो वैल्यू निकालनी थी उस कॉन्वर्सेशन में से, वो नहीं निकलेगी. एंड श्योर यू गेट द मनी राइट नाउ, बट लॉन्ग टर्म प्ले में, एंड आई वुड से श्योर ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी कैन, यू नो, अगर आपको पैसे मिल रहे हैं एंड रेजिस्ट, एंड ऑल्सो लाइक
आपको शायद आपके पास इतने पैसे ही नहीं है कि आप डिक्लाइन कर सको इस चीज़ को. इस पर मैं ये कहूँगी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बी अ सक्सेसफुल content creator and you think that this is going to be your only source of income right now, then that is like आप pathways देखो ना that you're leading to. It's a dumb move. Then I would say no. Do a 9 to 5. Leave the content creation for the weekend. Build the brand. Then leave your 9 to 5 and then make money when you have the say in making that money. Because what is the point? Because if you are going to just take any money right now for the sake of your content, you are going to destroy your brand in the long term. And then can it sustain you in the long term if it's not good enough? No. I don't then feel it's like, then you're just bumping your head into a wall eventually. So you need to have that insight and that vision that, hey, no, if I want money right now, then I need to find another source. The other day we had a startup who somehow like bring me a gift and said nahi bhai aapke liye laaye hain, but somehow like because in a podcast you don't have to be like disrespectful. What they did, they put their branding and their whole like PR package without the permission on the table, right? Because what I did in the start, I was very like, जब मैंने podcast start किया, again it's not a sponsored one because आपकी table पर कोई चीज़ पड़ा होती है and also you have come along and you have bring something for me from your brand के एक appearance है, चलो gift भी हो गया, and if we get the visibility through the podcast. So the first thing that when I start a podcast, this is not a sponsored one, although you will be seeing this package on the table, it is there, they have bring me this gift. अगेन आपके जहन में कोई ये चीज़ ना है कि यार आपको टेबल पर कुछ दिख रहा है तो आई एम लाइक जिस तरह ये है, इट्स नॉट स्पॉन्सर, यार मैं पानी पीता हूँ और एक्वाफीना ही पीता हूँ एंड आई लाइक दैट. अगर एक चीज़ मैं कर रहा हूँ तो ये यहाँ पर पड़ी है वरना ये साइड पर भी हो सकती. सो इट्स वेरी लाइक आपको अपनी ऑडियंस के साथ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है बिकॉज द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग एंड द विजन दैट यू हैव फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ योर्स ना, यू हैव टू बी वेरी क्लियर. ऑल्दो यू कैन नॉट स्टॉप द गेस्ट, मेहमान हैं, आपको बड़ा लिहाज और बड़े प्यार मोहब्बत के साथ चलना पड़ता है, इतने दूर से आए हुए होते हैं, कोई लाहौर से, कोई कराची से, कोई बाहर से. तो बट व्हाट यू कैन डू regardless, say to your audience, this is not a sponsored one, this is a gift that they have bring and मैं कोई लिहाज नहीं करूँगा कि अगर आपको ये लग रहा है कि ये PR पैकेज पड़ा हुआ है तो मेरे बड़े प्यार मोहब्बत वाले सवालात आएंगे और I will be just talking about the good qualities of the brand. If I have some critical questions that I have to ask, I will surely ask that. Yes, if the brand says we cannot discuss this and that, then I will say to them, when you are ready, come along. I'm always there for you because I love your brand. So I think be upfront and clear about your vision and a very long-term goal will help you like reap benefits in the long run. Right now, I don't have anything to sell, not a course, not a startup, not an e-commerce product, nothing, because I like this conversation, because I'm learning so much every single day from every single guest of mine from like different industries, and this is worthwhile to me. And the things that we talk about, like it was like complete Instagram masterclass for me, to be frankly honest with you. Like I have learned real stuff that आज से पहले मुझे पता नहीं थी, right? And maybe some of them I start implementing if I'm serious about it. So should we wrap this up? I just want to say two things. Okay. Do you have any migraine? Do you no, are you feeling right fresh? I'm feeling fine. Yes. Okay. Completely. मुझे पता भी नहीं चला 2 घंटे हो गए, like I said. Thank you for that. But because you asked me these 2 questions and I didn't answer them. So पहला जो ये था वो ये था कि and I really want to put this out there क्योंकि मैंने बात नहीं की, question का जवाब नहीं दिया, and I don't want anyone to feel like that I didn't answer it जान के. Because I do want to appreciate a lot of people. जहाँ आपने brands और PR वालों की बात की, it's a lot of times, yes, there are difficulties, there are issues, but I'd say पहले बहुत ज़्यादा होता था. Brands have come a long way, and I think maybe because I've been in the industry for 8 years, like you mentioned many times, and I've had relationships with so many people in PR and so many in brands.
it's gotten much better, and like it's like some of the brands, they work really well in the smoothest flow, in the best way, and they understand you, and wo yahi hai because you know you've built your brand so much, they know, they understand, they trust you as well. They trust you कि अच्छा यार इतना काम कर लिया है तो इसको पता है किसने कैसे करना है, so they do listen, they are willing to, you know, meet you halfway, they're willing to work together with you and create content on for their brand. Of course there are issues जो कि आते हैं, but I want to put out there, क्योंकि हमने ये conversation की, that I want people to understand as well कि जब हम sponsored content डालते हैं, we are not just a mouthpiece of the brand. We go back and forth on the briefs, on the concept, on what we want to say, on what we don't want to say, and it's a collaborative effort जिसमें हम अपनी say डालते हैं, and we do fight for the things that we don't want to say or do want to say, and there are so many partnerships that we don't do because we don't agree with them. जैसे हमारी बात हुई तो but yeah, brands have come a long way, the people in PR have come a long way. अभी भी issues होते हैं where people don't understand, and I think ज़्यादातर वो fresh होते हैं इंडस्ट्री में जिनको नहीं पता कि किस तरह किया जाता है, एंड कभी कभार इस तरह होता है कि आपकी मिसकम्युनिकेशन भी हो जाती है, आपके मसले भी हो जाते हैं, they don't approve the video that you worked so hard on, and they say नहीं फिर से बनाएं या वो करें, and you know, stuff like that. And I have been there where I have like scrapped my entire video, created a new video, done major edits and उस तरह से. But I think वो understanding जो अब हो गई है, पहले जो थोड़ा सा problem होता था, अब it's much better where you realize, okay, you know, the brand is right about a certain thing and I need to make this change, or you know, नहीं, like this is where I draw my boundary and make the brand understand कि ये नहीं हो सकता. तो वो I think communication बेहतर होगी है, plus managers play a huge role in this where they know how to communicate better. उनका काम ही ये है कि smoothly और peacefully इस चीज़ को manage करें, and I have to say that I love my managers and they've done a great job. To shout out to Fozia and Yusta. Yeah, amazing. Yeah. And because you know because when it's something so personal to you and you've created and you've made, you tend to get emotional about it. Yes. You know, no, this is right, this is what I created. But with managers, like you can say it to them and they will say it in a better way to the brand. So it's important to have that person in the middle who will have that conversation for you in a better way, so that you don't ruin your relationship as well. और जो दूसरी आपने मुझसे एक चीज़ पहले पूछी थी वो ये थी कि should an entrepreneur marry an entrepreneur or a creator marry a creator? Yeah. Yes. So उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि नॉट नेसेसरली. कुछ इंडस्ट्रीज़ में हाँ, आई थिंक इट हेल्प्स अ लॉट कि अगर आप भी एंटरप्रेन्योर हो, आपका हस्बैंड भी एंटरप्रेन्योर हो और क्रिएटर हो, तो बहुत सारी आपकी काम के एस्पेक्ट्स उनको समझ आ जाती हैं, यू कैन गेट हेल्प एंड यू कैन गेट सपोर्ट. But I would say not necessarily, because a lot of the times, you know, you can be in very different industries, and that is not the only thing that you need to connect on or have to connect on. You can have your own separate, you know, life and things and all of that, and still have a wonderful wo and do your own thing. In fact, I think I don't know what it would be like, because that is not in fact I remember कि जब मैं dentistry करी होती, so I would be excited to come home and share my experiences with my husband कि you know यूँ हुआ, ऐसे किया, मेरा आज ऐसा दिन गुजरा, लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स ऐसे हैं, कुछ पेशेंट्स ऐसे. So I think that's also sort of interesting for a relationship to make the other person understand. But हाँ, मैं अगर कहूँ I am a creator and I'm married to a creator, I think there's a lot of things and discussions you can have because you're in the same industry and understanding. But I don't think it's a necessary thing, or it's a very important thing. It's okay if that. Look, Hamza, I can talk to you. Hamna, I can talk to you like for another 2 hours. Like there's so many. I didn't know I could speak so much. Yes, you're amazing. You're amazing. I could talk to you literally for hours. Like we haven't just like talk about like the podcasting thing, and like there are so many variables in that. Like there are so many parts in that. Like. And there are other parts of somebody's life where you can learn a great deal out of it, like me personally and the audience at the same time as well. But it was amazing talking to you. Inshallah, we will sit down sometime in the near future once again, and we will start the conversation where we have left. But finally, you're a very important person of our community. The work that you are doing, again, how well informed you are, reasonable and logical
and the content that you are putting out both on the YouTube platform and then on the Instagram, it's fantastic, and I really love the content that you are putting out there. Any last word that you would love to say to our awamul khas audience? मैं उनको awamul khas बोलता हूँ because अगर कोई हमें 2 घंटे और 10 मिनट सुन रहा है ना, तो वो कोई आम बंदा नहीं है. बिल्कुल. मैं एक्चुअली उनको बस यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू मुझे 2 घंटे सुनने के लिए. आई डोंट नो इफ एनी ऑफ दिस वाज ऑफ वैल्यू टू एनीवन और टू यू, बट आई होप दैट इट वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू मी. मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया ये कॉन्वर्सेशन करके आपके साथ. बड़े अरसे बाद मैंने किसी के साथ बैठ के ये चीज़ें डिस्कस की हैं, एंड लाइक आई सेड आई हैवंट डन इंटरव्यूज़ एंड पॉडकास्ट और एनीथिंग और टॉक्स इन अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड दिस इज़ लाइक the first one in a long time. So I guess I had a lot to say and I had a lot of fun, and good luck to you for this. You're doing an incredible job, and thank you for appreciating my content. वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मैंने बहुत frankly सबको बताया कि I have been not feeling so great about the content I've put up. तो मुझे कोई थोड़ा सा भी appreciate करता है तो it means a lot to me. It gives me that, you know, motivation कि अच्छा यार नहीं इतना भी bad scene नहीं है. You've got this. Thank you very much once again, Humna. And मैं Humna का you are mostly active on your Instagram, right? Yeah. And your YouTube channel. These are the 2 major platforms where you're active, right? So I will link the description, these socials handles in the descriptions as well. Go check it out. And thank you once again. Allah Hafiz.